Good afternoon, everyone. I am Rana Ravi. I am from MSME and Startup Committee ICI. I would like to welcome our speaker, Mr. Deepak Makwana, sir, and our coordinator, Jai Hind, CA sir. Minal Khemka, ma'am, for MSME Pathshala Series 43. Today, our topic will be game changing marketing techniques to skyrocket your MSME growth. Ma'am, over to you. Yes. Good afternoon, everyone. Let's Good have afternoon. brief introduction of our speaker, Mr. Deepak Kumar Makwana. He is a mechanical engineer and completed his graduate in English literature. Mr. Deepak Makwana, who not only accomplished everything at an early age, but also considered others to leave it with him. He has been flourishing in the industry for nearly 29 years and is a renowned keynote speaker and expert on business development. Through his professional association, Mr. Makwana always remains on the beats of business partners. Mr. Makwana has a magical potential to extend business income, fortunes, and success by looking at the detail from entirely different standards. His business advice is widely read and accepted by the organization of all walks. He believes that everybody does not learn in the same way, so he provides an individualized approach in his session to help clients understand their problems and how to tackle and provide step curve to a business. He has worked all over India for his business coaching and training assignments. Over the year, Mr. Makwana has managed and overseen the field of business within the sphere. With his imaginary and welcoming soul, he is associated with widely known organizations like ICAI, ICSI, BNI, Gujarat Universities, etc. He is awarded the Best Business Coach title by Honorable Governor of Gujarat, Shri O.P. Kohli, in 2016. He stood second runner-up in a Iconic Trainers contest held by JCI India in 2021. He is founder and CEO of BizT. BizT is Asia's first continuous offline business learning platform based out of Ahmedabad. He is a visiting faculty of various educational institutes like PDPU, ICAI, ICSI, MBA Institute, Gujarat University, and DICCI, etc. He served his last tenure with HSBC as training head Gujarat in 2009. Since then, he is full-time business coach. Now I request to our speaker to start their session and increase our knowledge in the field of MSME. Sir, please start your session. So, what we're going to talk about today is marketing. Marketing, especially for the MSME as well as the startup. Now, before we go ahead, I would like you to understand that will it be a two-way communication or will it be a one-way communication? Shall we keep two-way or one-way? Sir, it is one-way communication. They will ask the question via chat. Okay, fine. Ma'am will ask So, you question. sure, Yeah, sure, no issue, sir. I have kept it two-way, no issue. First, let's understand the four word SAMB. Now, this is related to the marketing for MSME as well as the normal things. SAMB is typically sales, advertisement, marketing, and branding. If we are not MBA student and if we haven't gone through the Philip Kotler and other management books, the sales, advertising, marketing, and branding all look very, very similar. And a lot of time people confuse a lot. So let's have only one line definition of what is sales, what is advertisement, what is marketing, and what is branding. So what is sales exactly? The sales is when product goes out and money comes in. Only when these things take place, it is called sales. Now, what is advertisement? Advertisement is when you purchase a space, maybe in the social media, maybe in the print media, maybe in the TV, maybe in the e-media, maybe in the physical somewhere.
When you purchase a space to display, that thing is called advertisement. Now, what is marketing? For that, first we need to understand what is market. The market is where your customer is. Let's say there is no market for refrigerator in Eskimo's place because the customers are not there. So market is where the customer is, and marketing is wherever your customer is, you are talking and doing everything about your product, and that is called marketing. Now, what is branding? Branding is absolutely intangible thing. So taking or grabbing a premium ranking or premium space in the customer's mind is called branding. I hope these four things are clear. I'll repeat again. Sales is when product goes out and money comes in. Advertisement is when you purchase a space to display your product. Market is where customer is, and whatever you do around your customer related to your product or service, that is called marketing. And branding is getting a premium ranking or a space in the customer's mind. Now, four questions before we start marketing. There should be four questions that should be very, very clear to each and every MSME owner. The first question is very crucial question, that who is our customer? While answering this question, I have seen lots of MSME people, lots of factory owners saying that everybody is my customer. Now, psychologically, if everybody is your customer, nobody is your customer. That means everybody is equal to nobody. You have to be very specific that what age group, what geographical position, what income slab, what habit, what preferences, what pain area, what pleasure seeking things, those who are your client. Unless you make very specific thing about your customers, you cannot understand where and for whom to do the marketing. So first question, very crucial, is who is our customer? Second is, what pain do we solve? Normally, when I ask this question to the people that want what pain do you solve, people normally answer about their product. For example, when I asked an insurance agent that what pain do you solve, he said, I insure the people. I said, no, that is what you do. My question is, what pain do you solve? If I ask a restaurant owner that what pain do you solve, he said, we sell tasty food. I said, no, that is what you sell. That's about your product. My question is, what pain do you solve actually? And a lot of people are actually fumbling a lot while answering this question, that what pain do they solve? If you get the right answer, what pain your service or product can solve, let me tell you, you can increase your customer by 10 times because you can do the right marketing to the right audience. So this is the second very crucial question. What pain do we solve? Third question is, while answering this pain do we solve, we know that people purchase solution to a pain or a pleasure, or they purchase the emotions or status. Third question is, what is our compelling promise? Now, compelling promise is not about the product or the service. It is about your system. For example, when you go to Domino's, the Domino's says, if you do not deliver pizza in 30 minutes, the bill is on us. It's free from our side. They do not talk anything about the double cheese layer or the volcano cheese pizza or the how tasty their mushrooms are or what kind of capsicum they pour on. They just say, if you do not deliver within 30 minutes, the bill is on us. That is the compelling promise. So whenever you are into a rush and you wish that I want pizza in just 30 minutes, no other brand will be recalled in your mind, but only Domino's will be recalled in your mind. So that is called compelling promise. So what is that one compelling promise about your product or about your service that you are giving? You should be clear with that. And the last question is, what is our USP? If the same product is being sold by a couple of people, that means we have the competitors, then in what way you stand apart? So that is what's your unique selling proposition. What's your USP? If you are clear with these four questions, the target marketing will be really, really easy and will be effective, because I have seen people burning money, not money, but thousands of rupees, the crores of rupees into just marketing, and it has failed like anything. So answering this four question, SAMB, is really crucial. So now let's see marketing Picasso.
Why name that marketing Picasso? Because Picasso used very less amount of color and a very small brush. But with that, he can do the miracles. Similarly, marketing is also you just pour in a little money, a little, and you can do the miracles in the market with your product. Let's take an example. On the screen, I'm showing you one vehicle, and it is this one. Now, does it look good? Yes, it look amazing. Is it perfectly okay from all the things? Yes, it is perfectly okay. Is it state of the art latest product? Yes, it is state of the art latest product. All the amenities are there? Yes, all the amenities are there. But there is only one shortcoming. And that shortcoming is this plane does not follow the gravitation rule. Now, if this plane looks good, but it does not follow the gravitational rule, will it be able to fly? The answer is no. Whatever good things are there, if it doesn't follow the gravitational rule, it will not able to fly. Similarly, in the marketing, if product is good, but if it is not following the marketing rule, the product will not fly in the market. So what is exactly there in the market? We don't need to go to the MBA colleges. We don't need to go to the Philip Kotlers. We don't need to go to the management gurus for that. We just look around us. We just look into our TV screen and we can understand what is marketing. I'll show you two common commercials and we'll understand that what the market is behind. So this is the first commercial. There is a detergent bar and there are two females standing there. The female on the backside, she is looking at the sari of the front female. And what is there in her mind? In her mind, there is a Hindi saying, Are, iski sari, meri sari se safed kaise? That means in this commercial, the rain wants to say that if you wash your sari with some other detergent bar versus if you wash with our detergent bar, the result of our detergent, that is rain, is better than the other. And that's why in the advertisement that says, how come her sari is better than mine sari? Similarly, Tide. Even Tide says, if you wash your clothes with some other detergent versus if you wash your clothes with our detergent, the our detergent will give you the better result. So in both the cases, the word the marketing is behind is called the better. So we can say the market is behind better than others. When I say better than others, my service is better than other people who are giving the same service. My quality of the product is better than other people giving the same service. My taste of pizza or food is better than other people's pizza or food. My product life is better than other people's life. So constantly in marketing, we are pitching only one word, and that is better, 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 and better. We are better than others. This is what everybody is saying. Every news channel is claiming that we are better than other news channels. So all companies are there in the race of better. Even Samsung. Samsung started, I think, 10, 15 years back, S1, and then S1, S2, S3, till S24, S24 plus as on today. They've introduced the all models. And frankly speaking, to be on a lighter note, I feel it like a Gujarat Express. Gujarat Express is the train goes from Ahmedabad to Mumbai. And the coaches are S1, S2, S3, S3, S4. So it is said, as per the internal news, that Samsung has created till S35 in their laboratory, in their innovation center. But they are not releasing all at once. The question arises that why they are not releasing all at once? Because if they release everything at once, in the next 6 months or in the next 3 months, when they are going to launch their another Samsung, that is S25, what will they give better in that product? So every time to give something better, they are hiding one feature, and every time they are giving one better feature in that product. So entire world is behind that better, including Samsung. In fact, Colgate. Just recall the Colgate advertisement in your mind. Since my dada's age, my grandfather's age, Colgate used to give that small tin ka dibba, right? And there was a powder, and we used to brush our teeth. After 6 months' time, Colgate says with another thing and said, "Ab pehle se adhik behtar." After another 6 months, Colgate says, "Ab pehle se adhik behtar."
Now in the 2023, when I saw that again, saying अब पहले से अधिक बेहतर, there was a question in my mind, if this is the better product, if this 2023 Colgate is the better product, वो क्या था जो हम पिछले 30, 25, 40 साल से घिस घिस के बड़े हुए, इफ ये बेहतर था तो, राइट? सो पिछले 3 साल से दे आर सेइंग द सेम थिंग, अब पहले से अधिक बेहतर, अब पहले से अधिक बेहतर. माय क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग दे आर गोना कंटिन्यू दिस अब पहले से अधिक बेहतर? कब तक बोलेंगे कि पहले से अधिक बेहतर हम देंगे? समझो अगले 100 साल तक कोलगेट कंपनी चली, कोलगेट वाली कंपनी, तो कब तक बोलेंगे? द आंसर इज, every 3 months they have to speak अब पहले से अधिक बेहतर. That means better than before. That means better is an endless competition. There is no end to this competition. Constantly you have give better, 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 and better. If you don't do better, you are in a loop. Now, what is loop exactly? To be on the lighter note, you might have a friend who calls you and he says के और बता क्या हाल चाल है. So one of your friends calls you and said, और सुना क्या हाल चाल है? That means what's going on, this what's up now? And you said कि माँ पापा मजे में हैं, छोटी स्कूल जा रही है, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, बाकी सब ठीक ठाक है. That means you are saying everything is good at home, my parents are okay, my daughter is okay, my wife is okay, I am okay, everything is okay. And he says के अरे वाह, बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, और सुना क्या हाल चाल है? And again you start, माँ पापा मजे में हैं, छोटी स्कूल जा रही है, धंधा बढ़िया चल रहा है, बाकी सब ठीक ठाक है. And he again says कि अरे वाह, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है भाई, बहुत जी बढ़िया, और सुना क्या हाल चाल है? And you again start, माँ पापा मजे में है, छोटी स्कूल जा रही है, धंधा बढ़िया चल रहा है. Now this might have happened with you also. Your friend is calling and every now and then asking कि और बता. And you said कि हाँ बाकी सब ठीक ठाक है. Said और बता, नहीं बाकी तो सब ठीक ठाक है. That is a loop because nothing there to give extra. देने के लिए कुछ भी नहीं है. So they are just keeping a loop. Now the fun part is sometimes it's a double loop. Now what is double loop? Both the party are saying the same thing. So one guy says कि all well this side, you say, and the other guy says अरे मेरे यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है, तू बता. And he said अरे नहीं नहीं हम तो सब मजे में, तू बता. बोले नहीं नहीं इधर सब ठीक ठाक है, तू बता. So they keep on having the double loop. So when there is nothing better to share, we create the loop. That means companies are also offering every time better, but when there is nothing better to offer, they also go to the loop. Recall the Colgate ad again. I remember 1984 when I was into the school. There was a TV commercial on the about Colgate. There is a village guy, Dehati guy, and he's doing that gymming, etc., with the local things. And all of a sudden, his sister comes from college, and she looks smart compared to the other family people. And she says, "कि अरे वाह भैया, बदन के लिए दूध और दांतों के लिए कोयला." So he was teething his brush with that. He was brushing his teeth with that koila, charcoal. So at that time, they're making fun of the people who were brushing their teeth with the charcoal. Exactly after 10 years, there was an ad and said, अब चारकोल की शक्ति से भरा नया दंत मंजन. Now, this is called loop. पहले जिसकी मश्करी करते थे, अब उसी को माथे पे बिठाना पड़ता है. If I use the rough language, it is called थूका हुआ चाटना पड़ता है. Make sure मार्केटिंग में आप MSME में अपनी प्रोडक्ट के साथ ऐसा ना करें. Similarly, they did same thing. कि when somebody was brushing the teeth with that salt, another girl appears and says कि छी दांतों में नमक, देहाती कहीं के. And now if you look at the 2023-24 ads, when you're in the washroom, a girl breaks the washroom door and she gives the mic, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? 15 years back they were making fun of that, and now they're asking कि आपके टूथपेस्ट में नमक है. So this is called loop. If we are also in the same race, giving better every time, we also have two options. Number one, lifetime keep on giving better and better and better and better, or create a loop. But if you want to give better every time, or you want to create the loop every time, mind well, there is a huge budget
for R&D, research and development, as well as there is a huge budget for ad agency. There is a huge budget required for creativity, and there is a huge budget required for marketing also. So if you are in the race, the huge budget is required. And the session is all about how, without spending huge budget, we can do the marketing. So why we are in the race of better? There should be a human psychology. कि भाई हम बैटर के रेस में आखिर क्यों उतरे हैं? ऐसा तो क्या है बैटर की रेस में? Because there is a myth. Myth का अर्थ है गैर मान्यता. And the myth is, if I give better, people will switch to my brand. I repeat, there is a myth. If I give better, people will switch to my brand. And why I'm saying myth? Because this is absolutely nonsense. Just on a lighter note, I believe you all are married. So all the males, I'm asking you, do you have a wife? The answer is yes. Now, in your society, in your office, in your mohalla, in your building, there are lots of other better women who are much better than your wife. Did you switch over? The answer is no. I'm asking all the women. There are much macho men available in the society, in the building, in the office, everywhere. Did you switch over your husband? The answer is no. So though the better people are available, we do not switch over. Similarly, you have a car and there are thousands of better car available in the market. Did you switch over? Answer is no. You're using a particular mobile. In your hand, in your pocket, there is a mobile. Now, there are much better models available in the market. Did you switch over? The answer is no. The clothes you are wearing, there are much better brands available, much, I would say, premium brands available. Did you switch over? The answer is no. Similarly, your tea. In Gujarat, there is one famous tea wala called Wagh Bakri. In Wagh Bakri, there are lots of numbers. Wagh Bakri 9 number, Wagh Bakri 10 number, 11 number, 24 number. My family is very fond of Wagh Bakri 9 number. Now, since ages, when I say ages, I'm talking about the 3 generations. For the last 3 generations, we haven't changed from Wagh Bakri 9 number to Wagh Bakri 10 number. That means 10 number or 15 number or 24 number, they are much better flavors than what we are used to. And still, we are not shifting ourselves. So in the same company, we are not ready to shift our brand to the other thing. So people do not change. Let's say Amul milk. Those who are using Amul Shakti, they will not shift to Amul Gold. And the good example can be, you must be habituated to go to a temple regularly. Let's say near your house, there is a Shankar Bhagwan temple. You are going to that temple. Now, a little away, a new grand Shankar Bhagwan temple opens up, which is much better with the amenities and parking and everything. And it's AC also. Still, people will not stop going to that old temple because there is a connection with that, right? So people do not change unless they have unresolved complaints. The best example of unresolved complaints is Nokia, Fiat, and BSNL. Nokia, Fiat, and BSNL, they were ruling the market. If you go back to 1997 era or maybe 94, 95 era, 100% market was captured by Nokia. Android came into picture. Nokia did not change and people had a lot of complaint about Nokia. So people shifted to Android things. Similarly, Fiat. We requested Fiat a lot of times कि इसमें dynamo दे दो, इसमें AC दे दो, this दे दो, that दे दो. They said no, this is what we are selling. So we had a lot of unresolved complaints with Fiat, and Rajiv Gandhi introduced Maruti 800. Sanjay Gandhi introduced Maruti 800, and Fiat was out of the market. Similarly, BSNL, the biggest company of India, lots of unresolved complaints. They did not resolve, so people shifted. So people will switch the brand only if they have unresolved complaints. Otherwise, people do not shift to the brand, even if it is better. So it's a great myth. Now, better is an endless competition. And even if you give
better, people don't change unless they have unresolved complaints. So final words are, don't be better in the market. The question is कि भाई better न करे तो क्या करे? So some people said, okay, काम करते हैं, let's not be better. हम लोग डिट्टो बन जाते हैं, मतलब जैसा मेरा कॉम्पिटिटर दे रहा है ना, एग्जैक्टली वैसा मैं देना चाहता हूं. I'll give you exactly the same product which my competitor gives. Will this strategy work? Marketing strategy? Well, there are two identical twins. They look ditto to ditto. If you play with one kid and one kid goes into the room and the second comes out, you will not understand that this is the second kid. And you will play with the second kid, understanding you are playing with the first kid. So this way, they look absolutely ditto. They have the same smell, they have the smell physics, they have the smell, same sound also. And from whatever angle you cannot understand, you cannot differentiate who is who. No, there is one issue with these twins. The issue is when two are equal, the one is absolutely unnecessary. This is the golden rule. When two are equal, one is absolutely unnecessary. When we purchase the bike or a car, we are always given the two keys, one key extra. Now, do we take both the keys together? The answer is no. The one key is just hanging behind the tag, behind the door. That key is useless because we have one key already with us. Now, that key's importance will appear only when we lost this key. That means when two are equal, one is absolutely unnecessary. So in this case also, when there are two kids, people say, their parents say, the problem is any new visitor meets any one and does not meet and greet the other baby. Because अरे इससे मिल लिया ना, ये भी ऐसा ही तो है, इसमें नया क्या है अभी? If they say, parents they say कि भाई ये वो वाला नहीं है जिससे आप खेले थे, ये दूसरा बंदा है, तो they said कि हाँ ओके ठीक है, एक ही है ना. So when they play with the one kid, they won't play with the other kid. Can this happen with our product also? Answer is absolutely yes. Let's say if I come to you as a salesman and I'm there to sell something to you, and I would say, sir, I have a car which is exactly like your car. It looks like your car. It gives average like your car. It has all the facilities and amenities like your car. It has all the feature like your car. And even the price is same as your car. Please change the car. अब आप क्या बोलोगे? But what is the reason? Why should I change? If the both are equal, I'm okay with this one. People will ask, आप नया क्या दे रहे हो इसमें? Mind well, they are not asking कि आप better क्या दे रहे हो. They are saying आप नया क्या दे रहे हो इसके अंदर. So it's not better, it's the new. Similarly, if I say, sir, please take my company's TV. Which is exactly the inches are same, the 4K colors are same, the price is same, the remote is same, the feature is same, everything is same. You said there is no reason to change. Similarly, mobile. So if we give exactly ditto to ditto product, people will stick to the first product they have used. There is no reason to change. So when two are equal, one is absolutely unnecessary. So even if you are a ditto, you have to be first in chasing the customer, because the psychology says customer जिसके परिचय में पहले आता है उसी के साथ जीवन भर आगे बढ़ता है. So where should be, which is customer number one? Let's say MacBook and Windows. If I ask you which one is better, I'm damn sure those who have used Windows first in their life, they will say Windows is better. Those who have used MacBook first in their life, they would say MacBook is better. So first, आप जिसके टच में आए, जिसके परिचय में आए, वो आपको अच्छा लगेगा. Similarly, Gmail versus Yahoo Mail. If I ask you which one is better, if you use Yahoo Mail first, you will say Yahoo Mail is better. If you use Gmail first, you will say Gmail is better. Similarly, Hotmail. People who have used Hotmail somewhere in 1997, Hotmail was introduced by Samir Bhatia. Those people are still using Hotmail. They are not ready to leave that and shift to even Yahoo or Gmail. When I was in school, I'm talking about 1982, we used to have the Hero Pen. Hero Pen was the only thing we used to bring from China, and there were red and two colors pen. And my entire class of 1983 batch, we all are really crazy about Hero Pen even as on today. Now today there are much better pens available in the market.
our handwriting can be much better than compared to that hero. But still, because our emotions are attached there, we are not ready to shift from that pen, and we still use the hero pen because that is called the first attachment. Those who are born and brought up in early 60s, early 70s, they must have heard the Binaka Geetmala, especially the Amin Sayani, the first ever authentic certified RJ of India, who has just passed away, Amin Sayani ji. Binaka Geetmala, earlier it was Binaka, then later on it was Sibaka Geetmala. Now today on YouTube, thousands of better programs are available. But people of my age, they would still go to YouTube and they will search for the Binaka Geetmala. And we would love to listen to that old recording, old songs of that Amin Sayani. This is the power of the first introduction. So we have to always first in chasing the customer. So 6 lessons till now, what we have seen is people stick to the brand which they use first. So we have to be first in chasing the customer. Second, loop is the most nonsense thought in the world because huge R&D, huge budget is involved, huge creativity is required. People will switch if I give better is a myth. Unless they have unresolved complaints, people will not switch. Next is huge budget is must for R&D, for doing something better. And if two are equal, the one is absolutely unnecessary. Once I met somebody in Delhi, there was a trainer. I asked the trainer that you are doing soft skills for how many years? He said, sir, for the last maybe 6-7 years, I am doing soft skill training. I said, all right, now what's your goal now? क्या करना चाहते हो जीवन के अंदर? And he said कि सर मैं शिव खेरा बनना चाहता हूँ. I said, भाई साहब, if you become शिव खेरा, या तो शिव खेरा की वैल्यू रहेगी या तो आपकी वैल्यू रहेगी. But शिव खेरा is the first in hitting the customer, be in touch with the customers. So वैल्यू आपकी नहीं रहेगी, वैल्यू शिव खेरा की रहेगी. Because original is original and copy is copy. Let's say the famous singer अरिजीत सिंह. एक शो है अरिजीत सिंह का यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में. Now his stage is there in the center and there are chairs first row just maybe 20 feet away from the stage. You can see Arijit from just 20 feet. What will be the cost of that ticket, the front ticket? Maybe 5 lakh rupees. Why? Because Arijit Singh is going to sing there. All right. Now there is another program, a voice of Arijit Singh. There is a new singer who copies Arijit Singh like anything. His style, his voice, his utar chadav, his murki, his vibrations, his ठहराव, he copies everything. If you close your eyes and listen to both of them, original Arijit versus voice of Arijit, you being a diehard fan of Arijit, even you won't understand that whether it's Arijit singing or it's that duplicate singer is singing. Now, is this duplicate singer is saying that I'm going to do the stage show, उसके पास की पहली टिकट कितने में बिकेगी? Hardly 1000. Because original is original and copy is copy. Copy cannot have a bigger market share. Right? So if somebody becomes like Shiv Khera has a value because he has touched the customer first. So better is an endless competition. This is the last lesson we have seen till now. Moving ahead, okay, we have to be first in launching or chasing the customer. Now, what do you mean by being first in launching or chasing the customer? We need to make a strategy. Let's say we need to understand the difference between players of the market and competitors of the market. There are two words. One is called the player of the market and second is called the competitor of the market. Now, what is that exactly? Player and competitor, they are not same. Let's understand through potato chips segment. When I say potato chip segment, there are 4 players available in the chip segment. First is Lay's. I'm damn sure you all have seen as well as purchased as well as tasted the Lay's. Now this 100-gram pack, how much does it cost? Somewhere 80 rupees. कहाँ बिकता है ये? फ्लाइट में.
प्रीमियम डिपार्टमेंटल स्टोर में। ऑल राइट, सेकंड प्लेयर इज बालाजी। व्हाट इज द कॉस्ट? 20 रुपीज। कहां बिकता है? लोकल किराना स्टोर में। ऑल राइट, थर्ड गोपाल, फोर्थ श्रीराम, a local brand, and fifth a brandless. Now in all the packs the content is same, aloo wafer. कौन किधर काम करता है? This all are the same product, so they play the same game, selling the potato chips, so they are the players of the market. But are they competitor to each other? The answer is no. Why not? Because Lay's इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बिकती है, एशिया, मिडल ईस्ट, फ्लाइट पे, एयरपोर्ट पे, दैट इज अ मार्केट, उनके कस्टमर वहां पे बैठे हैं। बालाजी नेशनल मार्केट, इंडिया के बड़े शहरों में आपको मिल जाएगा, ऑल स्टेट्स में आपको मिल जाएगा। इफ यू गो टू द गोपाल, इट इज अ लोकल प्रोडक्ट, इट्स अ गुजराती प्रोडक्ट, सो गुजरात स्टेट के अंदर आपको मिल जाएगी। इफ यू गो टू श्रीराम, इट इज लिमिटेड टू ओनली अहमदाबाद मार्केट। एंड इफ यू गो टू दिस गृह उद्योग ब्रांडलेस, ये आपको कहां मिलेगा? एक टिपिकल एरिया के अंदर मिलेगा। दैट मीन्स दो दे ऑल आर प्लेयर्स, they are not the competitors to each other, because लेज वाले को पता है कि जो वो लोकल ब्रांड जो सबसे लास्ट में दिख रहा है ना, उतना जिसका बजट होगा ना, ही कांट अफोर्ड माई पैक्स, सो वो वहां तक मार्केटिंग नहीं करेगा। जो सिटी मार्केट वाली श्रीराम से संतुष्ट हैं, ही विल नॉट गो टू द बालाजी फॉर द टेस्ट, उसको पता है कि वहां पे अपनी जमेगी नहीं। So they all have a different segment, customer segment. So they are players, but they are not the competitors. साथ ही साथ I would say कि कालू एंड लेस कॉम्पिटिटर इसलिए नहीं है कि लेस को यदि आप बोलो कि एक लोकल गणपति उत्सव है, 10 दिन का जो गणपति हमारे यहाँ रहता है, और मे बी दैट कावड़ यात्रा इन यूपी, यू स्पॉन्सर दैट फॉर 25,000, दे विल डिनाई कि हम वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, थोड़े दिनों के बाद एशिया कप चालू होने जा रहा है, दे वुड लव टू स्पॉन्सर द एशिया कप फॉर 250 करोड़, बिकॉज लेज हैज अ ब्रांड नेम एंड एशिया कप स्पॉन्सरशिप विल लेवरेज दैट ब्रांड। सो ये दोनों जो हैं, ये सारे एक ही मार्केट के प्लेयर तो हैं, बट दे आर कॉम्पिटिटर नहीं है। अब जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो उनकी स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होनी चाहिए। सो इफ यू आर द एमएसएमई ओनर, you should also know that who is your customer. जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था, who is your customer, where is your customer? According to your customer, your marketing strategy should be decided, right? Next, let's say यहां से अंबाजी पगपाड़ा जो लोग चलते हुए निकलते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का रास्ता है, वहां पे यात्रिकों के लिए सुविधा के लिए कई सारे डोनर्स आते हैं। ये डोनर्स जो हैं, वो वहां पे कौन सी वेफर बांटते हैं? डू यू थिंक लेस प्रीमियम बांटते होंगे? नो, दे टेक दैट श्रीराम और द कालू वेफर। सो कहीं पे डोनेशन देना है तो श्रीराम या कालू वेफर याद आती है, किंतु आपको किसी प्रीमियम को, जैसे आपके समधी आपके घर पे आ रहे हैं, प्रीमियम कोई बंदा आ रहा है, उसके लिए आपको कुछ चाहिए तो आप लेज में जाओगे। सो दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट। सो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो ये तय करेगी कि किसका बजट कितना होना चाहिए। नाउ मेकिंग द स्ट्रेटेजी में एक जो है दैट इज लेज, ये बड़े समंदर के अंदर उसके प्लेयर हैं, और दूसरे जो है वो छोटी तालाब की मछली है। सो बड़े समंदर की छोटी मछली बनने से बेहतर है कि छोटे तालाब की बड़ी मछली बना जाए। ध्यान देना, जितने भी लोग एमएसएमई में काम करते हैं और दोज हु आर स्ट्रगलिंग वांट टू स्केल देयर बिजनेस अप, दिस इज द गोल्डन रूल कि बड़े समंदर की छोटी मछली बनने से तो बेहतर है कि छोटे तालाब की बड़ी मछली बना जाए। व्हाट डज मीन एग्जैक्टली? कि रादर देन अ टाइनी फिश ऑफ द ओशन बी द टाइकून फिश ऑफ द पॉन्ड। इसको थोड़ा लाइटर नोट में समझते हैं। रिसेंटली आई वाज एट सूरत, देयर इज एन एरिया कॉल्ड सग्रामपरा,
So we were standing there, and a little away there was a bunch of boys were standing there. अचानक 10:05 हुई, and everybody looked at a particular society gate. Now, this society gate, this lady, this is not actual photograph. That lady came, and everybody, each and every boy, mentally did tata, bye bye, hi to her, and she was also smiling. Then I asked someone, एक बच्चे को पूछा, मैंने कहा बेटा ये क्या था? And she said, हमारे मोहल्ले की कृति सनन है ये. Sorry, with apology to all the girls. But on a lighter note, if you understand this, even that lady knew that बच्ची जो जा रही थी, even she knew that I am valuable into this area only. If I go to the college, there is bigger competition. And she doesn't have the fan following there. So ये छोटे तालाब की बड़ी मछली थी. If she goes to college or maybe some fashion show, etc., वो बड़े तालाब की छोटी मछली बन जाएगी. So she has secured her place there. She knew where my fun following is. This is called बड़े समंदर की छोटी मछली बनने से तो अच्छा है कि छोटे तालाब की बड़ी मछली बना जाए. लुकिंग एट योर प्रोडक्ट, आपको लगता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हैं? मेक द स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, और बड़े तालाब की बड़ी मछली से फाइट करना होगा. इफ नॉट, पहले छोटा तालाब जो है उसको कैप्चर करते हैं, फिर आगे जाएंगे. स्ट्रेटेजी उस प्रकार से बनेगी. सो छोटे तालाब की बड़ी मछली बनने के लिए समंदर की मछली से और अच्छा बनने की कंपटीशन से, प्रतियोगिता से हमें अपने आप को बाहर करना होगा. और छोटे तालाब के अंदर कुछ नया, आई रिपीट, कुछ नया, बेहतर नहीं कह रहा हूं, कुछ नया कह रहा हूं, कुछ नया आपको सबसे पहले लाना होगा. अर्थात दो वस्तु करनी होगी, कुछ नया लाना होगा और सबसे पहले लाना होगा. क्यों? बिकॉज वी हैव जस्ट सीन कि कस्टमर जिसके टच में पहले आते हैं उसी से प्रेम करते हैं. सो कुछ नया लाना होगा और पहला लाना होगा, और फर्स्ट जनरेशन लीडर आपको बन जाना है. क्यों फर्स्ट जनरेशन लीडर बने? फर्स्ट जनरेशन लीडर इसलिए बनना है कि सेकंड जनरेशन को लगभग लगभग कोई याद नहीं करता. एक छोटा सा क्विज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं. आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग यू अ स्मॉल क्विज, and let me know if you can answer any of the question. I know it's a bit difficult. Which is the second tallest building in the world? If you're not Googling, I'm damn sure you will not understand that. First tallest building, maybe 50% of you know that, which is the first tallest building. But the second tallest building, nobody knows. All right. Which is the second largest palace in the world? No answer. If I ask you which is the biggest palace, you must be knowing. Second palace, God knows. Third, second man to land on the moon. Hardly somebody knows that. First man, everybody knows कौन था पहला बंदा. First, second बंदा, God knows कौन था. Second tallest mountain, nobody knows that. Second fastest man on the earth, nobody knows that. And the last question is really interesting. Can somebody tell me which was the second session of ICAI MSME? अभी आप 43rd अटेंड कर रहे हो. Which was the second session? Nobody knows. Under the office bearers, किसी को पता नहीं होगा. Everybody must be knowing the first session कौन था, किसका था. That means people remember the first generation or the first person or the first product they come into touch with. Second से आगे मेमोरी आपकी धोखा देती है. इसका उदाहरण करते हैं. गांधी जी आदरणीय थे. श्री राम, रिस्पेक्टेबल श्री राम. श्री कृष्णा, yes, holy Shri Krishna, just holy Jesus. If I ask you to speak about these four great people for 3 hours, there are a couple of people who would say, sir, 3 hours are not enough. I need 6 hours to speak about Gandhi ji. Some Kathakar would say, sir, I need 3 days or 6 days to speak about Sri Ram, about Sri Krishna. Some father of the church would say, sir, I need 6 days to speak about Jesus. All right. Now, if I ask you, speak just 3 minutes about Gandhiji's son, people will not. Just speak 3-4 minutes, 5 minutes about Love and Kush, people won't. Shri Krishna has 80 sons and 3 daughters. Talk any of them for just 5 minutes, people won't.
Same with second generation of Jesus. People can't speak. That means डिसाइड कि आपको एग्जैक्टली फर्स्ट जनरेशन कहां पे बनना है. इफ यू हैव एन एमएसएमई प्रोडक्ट, आपको फर्स्ट जनरेशन कहां पे बनना है ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि लोग मात्र फर्स्ट जनरेशन को याद रखते हैं. पीपल ओनली रिमेंबर द फर्स्ट जनरेशन. ग्लोबल लेवल पे बनना है, नेशनल लेवल पे बनना है, स्टेट लेवल पे बनना है, सिटी लेवल पे बनना है, एरिया लेवल और मोहल्ला या स्ट्रीट लेवल पे आपको फर्स्ट जनरेशन बनना कहां है. क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन? स्ट्रेटेजी ये है कि बॉक्सिंग में देयर आर कैटेगरीज, लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट, ऐसी कैटेगरी आती है. इफ अ लाइट वेट चैंपियन would fight to a heavyweight champion, what would happen? The light would be lose. So वो यदि एक बार अपनी कैटेगरी डिसाइड करते हैं, उस कैटेगरी अंदर वो आराम से फाइट दे सकते हैं. सो सबसे पहले जो काम करना होगा, फर्स्ट थिंग इज डिसाइड योर जोन as well as decide your category. That's first thing. Second, whoever your competitors are, remember I'm not saying the players, I'm saying the competitors. List them into descending order. बट उससे पहले हमें समझना होगा कि who is the competitor exactly. The players are not the competitors. Then who is the competitors? आपके कस्टमर के लिए आपका ऑप्शन जो भी है वो आपका कॉम्पिटिटर है. कालू वेफर का ऑप्शन लेज नहीं है, तो लेज इन कालू आर नॉट कॉम्पिटिटर. बट कालू वेफर के ऑप्शन में यदि और कोई वेफर मिल जाती है, देन दे आर द कॉम्पिटिटर्स. इफ आई स्पीक इन अदर लैंग्वेज, if some other brand, some other product, some other company, some other service can snatch your customers away, they are your competitors. जो आपका निवाला छीन के खा सकता है वो आपका कॉम्पिटिटर है. So whoever are your competitor in your typical zone, in your typical category, make the list of them and make them into descending order, ऊपर से नीचे. Now in that order, let's say there are 10 people. In that 10 people's list, 10 companies list, where do you stand? Let's say you are standing at number 6. If you are standing at number 6, then your only competitor is number 5. There is no other competition. Number 4 is not your competition, because 4 and 5 are fighting. Your fighting is only with the number 5. So number 5 is only your competition. Gradually try to eat his share and snatch his position. Meanwhile, you have to be very alert with number 7 also, because he is also trying to eat you. So you have to keep him away and you have to eat the share of the number 5. So if you're at number 6, fight with this and defend with this. This is the only thing you have to do. So 6 नंबर पे से आप 5 नंबर पे गए, 5 नंबर को हरा दिया. Now your competition is with number 4. उसको हरा दिया. Now number 3, then number 2, then number 1. And then the struggle will start to stay on the top at number 1. The biggest struggle is not to reaching number 1, but the struggle is to reach to number 1. Right? ऐसे करके आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं. कल्याण जी आनंद जी ऑर्केस्ट्रा, दे डिड द सेम थिंग. इसको थोड़ा बाद में बताएंगे. Number 1 is, we're talking about number 1 for sure, but the number 1 is a big illusion. Now, why am I saying that number 1 is a big illusion? Because where exactly do you want to be number 1? There are lots of positions to become number 1. If I take the example of taste, would you like to become number 1 in taste? Or would you like to become number 1 in sales? Would you like to become number 1 in quality? Would you like to become number 1 in Insta followers, in prospects memory? Exactly कहां पे number 1 बनना है? Number of branches में number 1 बनना है? Exactly कहां बनना है? Let's say MacBook is number 1 in technology. Yes, premium, most premium. सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी में अमेजिंग मैकबुक, ग्रेट. सेल्स में नंबर 1 कौन होगा? इट्स नॉट मैकबुक, इट्स डेल. सो टेक्नोलॉजी में मैकबुक सबसे ऊपर है, सेल्स में नंबर 1 डेल है. डिसाइड कि आपको टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनना है या सेल्स में नंबर 1 बनना है.
सिमिलरली मर्सिडीज टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, क्या सेल्स में वो नंबर 1 है? नो, सेल्स में नंबर 1 और कोई है? पॉपुलैरिटी में मारुति नंबर 1 है। क्यों? बिकॉज इंडिया हैज unofficially 150 crore plus population, and the most sold car is Maruti because it has a wide range, so most popular है वो। so popularity में मारुति नंबर 1 है, टेक्नोलॉजी में मर्सिडीज नंबर 1 है, सेल्स में Hyundai नंबर 1 है, सर्टेन सेगमेंट्स Hyundai नंबर 1 है। सो आपको यह तय करना होगा कि नंबर 1 आपको एग्जैक्टली कहां बनना है, टेक्नोलॉजी में, पॉपुलैरिटी में, सेल्स में, नंबर ऑफ ब्रांचेस में, टर्नओवर में, कहां पे आपको नंबर 1 बनना है। साथ ही साथ यू कैन नॉट हैव बैलेंस लेग, आप यहां पे भी करोगे यहां पे भी करोगे, इट्स नॉट गोना पॉसिबल। लेट्स से मर्सिडीज दे वांट टू बिकम नंबर 1 इन सेल्स, सो फर्स्ट थिंग सेल्स में नंबर 1 बनना है, looking at the India's average economy, they need to sell the cheaper car. Now if they need to sell the cheaper car, they cannot give the technology, so if they compromise in technology, they can be number 1 in sales. That means if you want to be number 1 at the sales, you have to lose your position of number 1 in the technology. यहां भोग दे करके यहां से हासिल करना होगा, which is said, कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिस्किट सेगमेंट की बात करूं तो सबसे अच्छा प्रीमियम बिस्किट कौन सा? मे बी दैट बॉन, राइट? पर सेल्स में सबसे हाईएस्ट कौन है? पार्ले जी। यू कांट बीट पार्ले जी एट ऑल। सो सेलिंग इज डिफरेंट, टेस्ट इज डिफरेंट, प्रीमियम प्राइस इज डिफरेंट। सो आपको एग्जैक्टली नंबर 1 बनना कहां पे है? बिकॉज एवरी चैनल इज सेइंग दैट वी आर नंबर 1, बट वी आर नंबर इन व्हाट सेंस? करेक्ट। सिमिलरली नंबर 1 का एक इल्यूजन Amazon पे बहुत चलता है। Every now and then, every author would claim that number 1 author in Amazon segment. Now, there is a question always कि यार इतने सारे ऑथर नंबर 1, इसकी पुस्तक इधर उधर तो कहीं लाइब्रेरी में दिखती नहीं है, किसी पुस्तक मेला में दिखती नहीं है, नंबर 1 कैसे बन गए? So there is a trick on that. I'll share later on. So select that zone जहां पे आपको नंबर 1 बनना है, introduce something new and be first to बी इन द टच विद कस्टमर। तो यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, टाइम का ध्यान रखिए। एक बार एक मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, 2020 की बात कर रहा हूं, एंड सेड मैं एक बहुत बड़ा नया बिजनेस चालू कर रहा हूं। मैंने कहा एक्सीलेंट यार, क्या बात है, मतलब लोगों के बिजनेस यहाँ पे बंद हो रहे हैं और भाई साहब आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो, बताइए क्या बिजनेस है? He said N95 मास्क एंड सैनिटाइजर। I said बॉस आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उसके अंदर और कितने लोग हैं? बोले 256। मैंने कहा उसमें से N95 मास्क और सैनिटाइजर बेचने वाले कितने लोग हैं? बोले 100 प्लस। मैंने कहा कभी किसी से पूछा है कि ये लोग जो इंक्वायरी डालते हैं, व्हेन दे आर फ्लोटिंग द इंक्वायरी दैट आई नीड 1 लाख N95 मास्क और आई नीड 1 लाख 5 लाख बॉटल ऑफ दैट? बोला हाँ एक बार पूछा था। ऐसे तो व्हाट हैपन? दे सेड कि किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा था, वहां से इंक्वायरी हमने इधर डाली। मतलब इन दैट वन और व्हाट्सएप ग्रुप एवरीबडी इज सेलिंग द सेम थिंग, हु विल परचेज योर प्रोडक्ट? सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है? जब लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट या उसकी कोई डिमांड है, तब आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है। सो टाइमिंग यदि गलत है, यू कैन नेवर बिकम नंबर 1 इन द प्रोडक्ट। So introduction at the wrong time will kill you. If you copy someone in introduction, you might end up losing the huge money. And the best example is Subiksha market. I'll skip that example, but I'll go with HP. HP ने कॉपी किया था कंप्यूटर बनाने में। किसका कॉपी किया था? IBM. IBM is called भीष्म पितामह of making the computers. So उन्होंने कंप्यूटर्स बनाए, HP ने पीछे पीछे कंप्यूटर बनाने चालू कर दिया। Nobody bought their computers because IBM was the first to be in touch with the customers. So HP made a huge loss. Then HP started looking for things कि यार कहाँ पे अपना मार्केट हो सकता है, and they saw that there are huge printing machines available.
which can be afforded only by the companies. But people do not have the personal printer, individual printer जो desktop पे ऊपर रख सके. So they started doing R&D, and they became the first people to introduce the small handy personal printer. डेस्कटॉप के बाजू में इतना छोटा सा प्रिंटर रख के उसकी प्रिंट निकाल सके. They become the first people. Now today if you go, HP's desktop selling is only 5%, but desktop printer में they captured the 45% share. This may be plus minus according to the latest news, but 45% printer का market आज HP के पास है. So do not copy somebody just like that. Being first, उसके advantage है. The answer is yes, there are advantages. Disadvantage है? Yes, in fact, disadvantages are more than the advantages. कैसे? पहले एडवांटेज देखते हैं. Your name will be immortal. If you are the first person to introduce that, उस प्रोडक्ट के साथ आपकी कंपनी का नाम जुड़ जाएगा. जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा भगीरथ. I'll give you the भगीरथ, भीष्म, हरिश्चंद्र and गांधी जी. भगीरथ राजा, he did an amazing job, and he brought that Ganga Nadi, river Ganga, to earth, पृथ्वी. So गंगा नदी को स्वर्ग से उतार के, शंकर जी की जटा से उतार के पृथ्वी तक ले आना, यह बड़ा दुष्कर कार्य था. इसलिए आज के बाद जब भी कोई दुष्कर कार्य, डिफिकल्ट टास्क आता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे बड़ा भगीरथ कार्य किया इन्होंने. सो भगीरथ हैज बिकम इमॉर्टल विद अ डिफिकल्ट टास्क. सिमिलरली भीष्म टुक अ रेजोल्यूशन, प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, जीवन भर ये 1 2 3 4 ये करते रहेंगे, एंड ही फॉलोड दैट ऑल. सो आज के बाद जब भी कोई बड़ा सा रेजोल्यूशन लेता है और उसको डट के रहता है, वी सेड भीष्म प्रतिज्ञा ली है उन्होंने. Similarly, when somebody speaks truth, we said राजा हरिश्चंद्र का अवतार है. When somebody believes in अहिंसा, we said गांधी जी का अवतार है. So, if you are somewhere very first, आपका नाम जो है वो इमॉर्टल हो जाएगा और उस प्रोडक्ट के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा. I'll give you a couple of examples. Xerox. ये पहली कंपनी है those who introduced the copying machine. But because there was no other company which were making copying machine, सब लोगों ने सारे कॉपिंग मशीन को जेरोक्स बोलना चालू कर दिया. आज लोग ये कहते हैं कि हमने कैनन का जेरोक्स मशीन लिया है. सो इट्स अ कॉपिंग मशीन, राइट? सिमिलरली, फर्स्ट पेट्रोलियम जेली वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी कॉल्ड वेसलाइन. आज लोग हर पेट्रोलियम जेली को वेसलाइन कहते हैं. आई एम डैम श्योर आपके पास ऐसे बहुत सारे नाम होंगे. थर्ड इज मैगी. टॉप रेमन was the first company to introduce the noodles in the market. But India में मैगी was the first company to be introduced. इसलिए आज हम हर नूडल्स को, कोई भी नूडल्स देख लो, हम उसको मैगी कह के बुलाते हैं. इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट माय होम, couple of days ago I was going out to market to shop something, and मुझे पता है घर से क्या बोला? पतंजलि की बाबा रामदेव वाली मैगी लेके आना. I said okay, fine. So that was Patanjali Baba Ramdev Maggi, right? Casio, they make the synthesizer. तो synthesizer which is called keyboard. आज हम हर कंपनी के सिंथेसाइजर को केशियो कहते हैं. कई कई बार तो मैंने सुना है कि दुकान में जाके कहते हैं कि यामाहा कंपनी का केशियो दीजिए हमें. सिमिलरली प्राइमस जो स्टोव बनाती है, आई एम डैम श्योर आप में से बहुत जो नए बच्चे हैं उनको पता चला होगा कि प्राइमस एक्चुअली प्रोडक्ट का नाम है, कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम नहीं है. द प्रोडक्ट इज स्टोव. सिमिलरली कैडबरी. हम भारतीय लोग कोई भी चॉकलेट, थोड़ी सी कॉफी दिखनी चाहिए, हम उसको कैडबरी बोल देते हैं. इनफैक्ट हम तो यहाँ अमूल के स्टोर पे जाके मांगते हैं कि कैडबरी की चॉकलेट है, तो वो अमूल वाला कहता है कि हाँ अमूल की कैडबरी है हमारे पास, रादर देन सेइंग कि अमूल की चॉकलेट है, राइट? सिमिलरली सेलो टेप, द फर्स्ट एडेसिव टेप. कोई भी गजल आप देख लो, कुछ नहीं समझ में आता है तो लोग कहेंगे मिर्जा गालिब की गजल है. दिस पीपल हैव बिकम इमॉर्टल. सो फर्स्ट रहने का एडवांटेज भी है कि आपका नाम अमर हो जाएगा, साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज क्या है कि एग्रेसिव मार्केटिंग एंड बेटर टेक्नोलॉजी कैन किल द फर्स्ट इंट्रोड्यूसर इन द मार्केट. एनी एग्जांपल? यस, द बिगेस्ट एग्जांपल आई हैव इज कॉल्ड ऑर्कुट. ऑर्कुट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसने सोशल मीडिया चालू किया था, एंड विच वाज फार बेटर देन फेसबुक ऑल्सो. इनफैक्ट आई वाज ऑल्सो ऑन ऑर्कुट, एंड मोर देन 5 लाख पीपल वर देयर ऑन ऑर्कुट. सिमिलरली जो फेसबुक में है वैसे सारे फीचर्स थे. But later on, Facebook entered the market and they did very aggressive marketing.
and they brought certain new features, not better, new features. वो लेके आए, they understand the pain point कि ऑर्कुट उपयोग करने वाले के पेन क्या थे, and when they introduced that, almost in, I would say, 30-35 days, the Orkut company was gone. And it was said in the meme also कि the biggest क्या कहते हैं, हिजरत, the biggest हिजरत has in the mankind history is from Orkut to Facebook. Biggest migration took place from Orkut to Facebook, right? So advantages are more than disadvantages. पहले आने के डिसएडवांटेज भी हैं, बट उसमें एडवांटेज सबसे अधिक मात्रा में है. So be the first in the category. फर्स्ट बनने की बात हो रही है. वी हैव सीन के फर्स्ट कहां पे बनना है, टेक्नोलॉजी में, सेल्स में, नंबर ऑफ ब्रांचेस में, इसमें. बी फर्स्ट इन द कैटेगरी. आई एम शोइंग यू कपल ऑफ फेसेस हियर. इफ एनीबडी कैन रिकॉल, दिस इज मिस्टर सी के नायडू. तो सी के नायडू is the first captain of India. So this tag, first captain of India, cannot be taken away. For the lifetime, he can be the first captain of India. ये बिरुद उनके साथ अमर हो गया, इमॉर्टल. इसको कोई छीन नहीं सकता. कपिल देव, he was 21st captain of India. सी के नायडू के बाद कोई और आया, उसके बाद कोई और आया. He was the first 21st captain. So can he have the first captain of India tag? The answer is no. But he was number one captain in some other category. I'm damn sure those who are the cricket lover, they must be knowing that Kapil Dev was the first captain of India to win the World Cup for India. So C.K. Naidu was the first captain of India. Kapil Dev was the first captain for India to win the limited over cricket World Cup. दोनों की कैटेगरी अलग अलग हैं, बट दोनों अपनी कैटेगरी में फर्स्ट हैं. इनके बाद आदर से नाम लेना चाहूंगा सुनील गावस्कर जी का. Was he the first captain of India? Answer is no. Did he win the World Cup ever for India? The answer is no. But he is first into his category. Any idea which category? Yes, he was the first person to, he was the first captain to hit the 10,000 run in the Test cricket. टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन करने वाले पहले व्यक्ति, पहले कैप्टन थे. दिस इज हिज कैटेगरी. सो बीइंग फर्स्ट कैप्टन इज द वन कैटेगरी, winning the World Cup for India is another category, and hitting 10,000 run chase is the third category. Next category, I would say Yuvraj Singh. Which category he hit first? Six sixes? No, I'm sorry. In first class cricket, Ravi Shastri already hit 6 sixes to Deepak Tilakratne in Mumbai Wankhede Stadium. But Yuvraj Singh was the first cricketer to hit 6 sixes in the World Cup. वर्ल्ड कप में 6 बॉल में 6 6 मारने वाले पहले बल्लेबाज. फर्स्ट इन द कैटेगरी. धोनी, neither he was India's first captain, nor he was the first captain to win the World Cup, nor he hit 6 sixes, nor he hit the 10,000 run mark. Then what is he unbeatable into the category? He is the first captain in the entire world to win the limited over 50 over cricket World Cup as well as T20 World Cup for his team. एक साथ दो अलग अलग फॉर्मेट में 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले विश्व के सर्वप्रथम कप्तान. ही इज नॉट द ओनली, बिकॉज उसके बाद में तो किया लोगों ने, बट व्हेन ही वॉन दैट, ही वाज द फर्स्ट इन द कैटेगरी. नाउ दिस लेबल फर्स्ट इन द कैटेगरी इज इमॉर्टल. अभी इनसे कोई छीन नहीं सकता. आपके प्रोडक्ट के साथ, आपकी कंपनी के साथ, आपकी सर्विस के साथ, या आपके साथ ऐसा कौन सा कैटेगरी इमॉर्टल स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा है? फाइंड आउट. कहां पे आप क्या कर सकते हैं? रोहित शर्मा, दो आंसर इज क्लियरली देयर. ट्रिपल बखत डबल सेंचुरी करने वाला विश्व का एकमात्र बंदा. 209, 264, 208, राइट? सो बी द फर्स्ट इन द कैटेगरी. Jawaharlal Nehru, first in the category. If I say, he was the first PM
of independent India. Then Indira ji. She was not the first PM of independent India, but then she was the first lady PM of India. Talat ji. This is Talat Mahmood, one of my favorite singer. He was not the first person to sing the song, but he was the first person to sing the song with a vibrato in the vocal. यानी आवाज में एक खनक, एक गुजराती में ध्रुजारी कहते हैं इसको, खनक के साथ ये गाने वाले पहले सिंगर थे, वाइब्रेटो के साथ. उनके गाने सुनिएगा आप, बड़ा आनंद पाएंगे. नेक्स्ट इज, एक जमाना था सूर्या जी, शमशाद बेगम जी, नूरजहां जी. ये तीनों के यदि गाने आप सुनोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये दिस ऑल थ्री वर द नेसल सिंगर, नाक से गाते थे. एट दैट टाइम लता जी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड लता जी बिकेम द फर्स्ट सिंगर टू सिंग फ्रॉम नॉन नेसल, इनफैक्ट फ्रॉम द वोकल. गले से गाने वाली ये पहली महिला बनी. ये तीनों जो गाते थे, सूर्या जी, नूरजहां जी, शमशाद जी, ये तीनों बड़े आदरणीय हैं. दे ऑल थ्री वर सिंगिंग फ्रॉम नेसल, नाक से गाते थे. शी वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट विद द वोकल. कल्याण जी आनंद जी. अब तक ऐसा था कि सॉन्ग्स कैन बी ओनली इन द फिल्म्स. सॉन्ग्स एंड फिल्म्स आर joined forever, they cannot be separated, but they introduced called the live orchestra, and they became the first music director to introduce songs without film, and that's called the live orchestra. और उनकी लाइव ऑर्केस्ट्रा की प्रोडक्ट्स यदि आपको बताऊं तो श्रेया घोषाल, कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम, वंदना वाजपेयी एंड लॉट्स ऑफ अदर पीपल, ये उनके लिटिल वंडर्स के प्रोडक्ट्स हैं, which are the world famous products now. So they are in the first in that category. ये लिटिल वंडर्स की बात कर रहा हूं. सो अब आप बताइए कि आपकी कास्ट में यदि कोई आईएएस ऑफिसर पहला बना है ना, तो अगले 100 साल तक आपकी कास्ट के सोवेनियर में या कहीं पे उनका नाम, उनके परिवार का नाम आएगा कि भाई हमारी कास्ट का, हमारे समाज का सबसे पहला आईएएस ऑफिसर है. उसी प्रकार से आपके हमारे गांव से पहला ग्रेजुएट है ये, या फिर हमारी परिवार में से ये पहला बंदा है जो विदेश गया था. दैट्स कॉल्ड फर्स्ट इन द कैटेगरी. सिमिलरली यदि आप जैन हैं और आपके परिवार में से किसी ने दीक्षा ली है, यू कैन प्राउडली से ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट दीक्षा फ्रॉम आवर फैमिली, राइट. और कोई आपकी तरफ है तो भी आप बता सकते हैं. सो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाहता हूं कि यू नीड टू फाइंड आउट द कैटेगरी in where you can claim that you are number one, you are the first person. It can be a product, it can be a service, it can be a company to have something, it can be you as an owner. चार में से कुछ भी एक हो सकता है. We have to select something जहां पे हमने कुछ किया है पहली कैटेगरी के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी फैक्ट बेस्ड और अ फीलिंग बेस्ड. इफ आई से आई एम द फर्स्ट बिजनेस कोच फ्रॉम माई फैमिली, is it the fact? The answer is yes. In my entire family, there is nobody who's a business coach. I'm the first business coach. Now, I say, because I'm the first business coach from my family, kindly give your company's coaching to me. You'll say, no, boss, sorry, we're not going to do that. We'll check your track record. Arthat, I'm the first business coach of my family is more a feeling rather than a fact. Fact based है नंबर वन, तो आप उसको बेच पाओगे, लोग उसका पैसा देंगे. फीलिंग बेस है तो आप घर में तस्वीर टांग के रख पाओगे, लोग पैसा नहीं देंगे उसका. ओनली फैक्ट बेस्ड कैटेगरी इज सेलेबल और वाइस वर्सा. ओनली सेलेबल कैटेगरीज कैन बी द फैक्ट बेस्ड कैटेगरी. सम फनी फीलिंग बेस्ड क्लेम्स में जो कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसे भूल करती है मार्केटिंग में. सो फीलिंग बेस्ड क्लेम्स में आपसे कह रहा हूं, अहमदाबाद के अंदर एक ट्रेनर ने कहा था कि अखबार के अंदर इश्तिहार दिया था, ही गिव अ वेरी ह्यूज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, the Ahmedabad's first trainer to use the Bose system in the training programs. No, it was so funny. I'm just asking to you also. Just because a trainer is using a 2.5 lakh rupees system from the stage, will you attend this program by paying some 10-15,000 bucks? The answer is no. In fact, the question is nonsense. अरे भाई, कोई 2-2.5 लाख रुपए का माइक उपयोग करता है, just because of that मैं उसके प्रोग्राम में चला जाऊं? But that trainer was so enthused. He continuously gave, I think, 3, 4, 5 days advertisement in all the leading dailies. Ahmedabad's first trainer to use the Bose system. अच्छा, जिनको Bose नहीं पता है, let me tell you,
बोस का सबसे छोटा सा हेडफोन, ये जो मैंने पहना है ना, छोटे से छोटा हेडफोन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 37,000 प्लस जीएसटी, वहां से चालू होता है. क्वालिटी इज अमेजिंग, सुपर डुपर क्वालिटी. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शुड आई गो एंड अटेंड दैट प्रोग्राम? द आंसर इज नो. आई बी नॉनसेंस इफ आई डू दैट. दूसरा, इंडिया यंगेस्ट बिजनेस ट्रेनर. Now, why this is nonsense? Because if I'm running a business and if I'm getting some troubles into my business, I will look for the experienced person. I will look for the salt and pepper in the hair. Only then I'll understand that guy has much more experience than I have. उस केस में यदि आप 22, 23, 24 साल की उम्र में बोलते हो कि आई एम द इंडियाज यंगेस्ट बिजनेस ट्रेनर, people will come to your program for the fun, not to learn the business. So this is filling based nonsense. First coach to purchase BMW. This is what I could see in Mumbai. मुंबई में एक ट्रेनर ने मुंबई मिरर में बीच के पन्ने पे एडवर्टाइजमेंट दिया था. फर्स्ट कोच टू परचेज द BMW. I don't know how come he's going to make the difference to the coaching. God knows. The only trainer to take entry from the sky. ये मलेशिया की एक उसमें मैंने देखा था. वो भाई साहब कहीं हवा में से एंट्री मारते थे स्टेज के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. And there he wrote the only trainer to take entry from the sky. God knows, लोग सर्कस देखने जाते थे, क्या करने जाते. So these are the funny taglines, funny number one taglines. Please stay aware. Now, some professional category. Savlon. They were the first to introduce antiseptic without burning sensation. जिन लोगों को कभी चोट आई है और जिनके ऊपर डेटॉल डाला गया था, उन सबको नानी याद आ गई होगी जब डेटॉल डाला था, बिकॉज इट बर्न्स अ लॉट. देयर इज लॉट ऑफ बर्निंग सेंसेशन. Savlon was the first company to introduce antiseptic without burning sensation, and they could eat a lot of market share of Dettol because that was the pain area. Second, Pierce. This is the first company to introduce something which was the solution to a pain area, and that was Pierce No Tears. Because Pierce was typically made up of that glass kind of effect. So, and it is not rectangle, it is that oval shape. So a kid would love to play with Pierce. When a kid is taking bath, when mummy is bathing kid, साबुन आंखों में जाता है. जब आंखों में जाता है तो बच्चा 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रोता है. That was the all mummy's pain कि बच्चा रोता बहुत है. So Pierce introduced the soap Pierce without tears. They were the first in the category to introduce the soap without tears. Sony. They introduced something for the first time in their life. If you've seen that stereo system, there was this much big stereo system. You can't carry on your shoulder and you go there. But still, Africa में लोग करते हैं. But Sony was the first company to introduce the personal music system, and that was Walkman. I had my Walkman. I used to use that, and still I have my Walkman. मैंने यादगिरी के रूप में संभाल के रखा है मैंने Walkman. Sandwich was the first food to be consumed with one hand. ऐसी बहुत सारी वस्तुओं आप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. आपको मात्र ये खोजना होगा कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आप या आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में फर्स्ट बन सकते हैं, और फिर उसको ध्यान में रख के यू टू डू द कंप्लीट मार्केटिंग. नाउ इट इज सेड कि इफ आई कांट लर्न द वे यू टीच मी, कैन यू टीच मी द वे आई लर्न. ये बच्चों के लिए कहा जाता है. कोई एक शिक्षक जब उनको सिखाते हैं और बच्चे सीखते नहीं है, तो बच्चों की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि इफ आई कैन नॉट लर्न द वे यू टीच, कैन यू टीच मी द वे आई लर्न. सिमिलरली मार्केटिंग में भी ऐसा कहा जाता है कि इफ यू आर नॉट द फर्स्ट इन द कैटेगरी, कैन यू फाइंड द कैटेगरी वेयर यू कैन बी द फर्स्ट इन. इफ योर आंसर इज यस, फाइंड दैट कैटेगरी एंड बी नंबर 1. सो आपका सबसे पहला कार्य होगा कि एक ऐसी कैटेगरी खोजिए जहां पे आप नंबर 1 बन सकते हैं. यू कैन बी नंबर 1 इन दैट कैटेगरी. बीस्टी विच इज माय कंपनी, जो आप ऊपर खोज रहे हैं, ये जीरो नेटवर्किंग ऑफलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है. Can it fail? The answer is yes, it can fail also. First in the category can fail. Now this is Keo Carpin. Keo Carpin was the first company to introduce non-sticky oil. People's problem with the oil, hair oil, was
स्टिकीनेस। कई कई बार तो पसीना आता है ना, तो यहां से ऑयल भी निकलता है नीचे। Stickiness was the biggest issue. Keocarpine introduced the first oil of that non-stickiness. Did they succeed? Answer is no. Because kinesthetic, ना visual, auditory, kinesthetic में से kinesthetic, लोगों को ऑयल के स्पर्श की इतनी आदत लग चुकी थी कि यदि चिपचिपा नहीं है तो ये ऑयल ही नहीं है. दिस वॉज द इंडियन मेंटालिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये नहीं चला. दो दे वर फर्स्ट इन द कैटेगरी, दे फेल्ड. So being first in the category is not a guarantee. You have to be ready to take the risk also. Second example मैं देना चाहूंगा IFB. IFB is the first company to introduce the washing machine in India. But the washing machine in India, they introduced with the front door. आगे से दरवाजा खोल के अंदर कपड़े डालने हैं, करना है. They miserably failed. क्यों फेल हो गए? फिर अगेन सर्वे किया, ये किया. सर्वे में जब 300, 400, 500, 600 लोगों से मिले, उनको पता चला कि कहां पे खता खा गए थे. इंडियन वुमेन, उनको खड़े खड़े बाल्टी में से कपड़े लेकर के तार पे सुखाने की आदत थी. फ्रंट डोर मात्र अलमीरा में, कपबोर्ड में देखने को मिलता था. तो जब वॉशिंग मशीन खोल के फ्रंट डोर में कपड़े डालते थे, उनको ऐसा मेंटली था कि धोए हुए कपड़े ही इस प्रकार से दरवाजा खोल के डालने पड़ते हैं. धोए हुए कपड़े, गंदे कपड़े तो यहां से उठा के ऊपर डालने पड़ते हैं. Now this when it was came to the companies known, उन्होंने ओवरलोडिंग फ्रंट डोर में से निकाल के ऊपर वाले कपड़े ऊपर से लोड करते हैं, ऐसे मशीन को इंट्रोड्यूस किया, एंड दे वर अ ग्रैंड सक्सेस. सो हमेशा बीइंग फर्स्ट इन द कैटेगरी इज नॉट फ्रूटफुल. उसी प्रकार से फर्स्ट आयुर्वेदिक बीड़ी, फर्स्ट आयुर्वेदिक स्मोकिंग सिगरेट, ये मार्केट में आया था, जो आपको बिल्कुल हार्म नहीं करती. मिजरेबली फेल्ड. पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट. पीपल कहते हैं कि भाई नुकसान होगा तो होगा, मर जाएंगे 10 साल जल्दी, लेकिन पिएंगे तो ये तंबाकू वाला. सो दे मिजरेबली फेल्ड. होम रोटी मेकर, भारत की करोड़ों स्त्रियों की समस्या. होम रोटी मेकर was an amazing machine. Pour some atta, that is wheat, pour some salt, pour some water, and just press the button. You need 30 rotis. The atta अपने आप बन जाएगा, 30 रोटी बाहर आ जाएगी गर्मा गर्म. So it was a solution to the crores of people, but it was solution to the woman, not the man. The Indian man typically they need चूड़ियों की खनक वाली रोटी, and this machine cannot produce that. So miserably failed. But there are advantages also. सामने एडवांटेज भी हैं. ये हैं कि आपको आपकी ब्रांड नेम को प्रमोट नहीं करना पड़ेगा. आपकी ब्रांड नेम जो है वही कॉमोडिटी बन जाएगी, जो हमने अभी ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं. सो कई बार गूगल की बात करूं, मार्केटिंग के अंदर प्राइवेट गूगल वर्सेस पर्सनल गूगल की मैं बात करता हूं. हम लोग एक बार 1985 के वेकेशन में क्रिकेट खेल रहे थे. वहां पे कोई भाई आए, बोले जिग्नेश भाई किधर रहते हैं? वी ऑल सेड के कौन जिग्नेश भाई? अरे वो ऐसा इतना इतना छोटा सा कद है, ये है, थोड़े से मोटे हैं, दिस एंड दैट, ये वो. जिग्नेश भाई करते रहे. कई लोगों के समझ में नहीं आया. हमने सभी बच्चों से पूछ लिया कि भाई जिग्नेश भाई कौन है? बोले कोई नहीं. फिर जाकर के उसने बोला कि ये उनका स्कूटर का नंबर ये है. तुरंत हम में से एक बंदा बोला, अरे ऐसा बोलना यार, छोटा हाथी के घर पे जाना है तुझे. छोटा हाथी के घर पे हमने पहुंचा दिया, जिग्नेश भाई के घर पहुंचा दिया, बिकॉज जिग्नेश भाई वाज नोन एज छोटा हाथी इन अवर एंटायर सोसाइटी. सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जिग्नेश भाई का नाम लोगों की मेमोरी में से निकल चुका था और छोटा हाथी रिप्लेस हो चुका था. दिस इज कॉल्ड प्राइवेट गूगल वर्सेस पर्सनल गूगल. सर्च इंजन कितने हैं हमारे पास? बहुत सारे हैं. सबसे अधिक फास्टेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, राइट? सो मैं आपसे कहता हूं, आपके घर के सबसे नजदीक का मंदिर कौन सा है? याद आ गया? आ गया. क्या आपने गूगल चेक किया? नहीं, आपने अपनी मेमोरी चेक की. ऑलराइट. आपके घर के सबसे नजदीक का थिएटर कौन सा है? तुरंत आप में से कई लोगों ने आंख बंद करके रोड से यूं जाकर के, हाँ ये वाला थिएटर पहले आएगा, ऐसा भी कर लिया. थिएटर याद आ गया? आ गया. क्या आपने गूगल चेक किया? नहीं, आपने मन का सर्च इंजन चेक किया. आपके घर के सबसे नजदीक में डी मार्ट कहां पे है?
हाँ, मैंने देख लिया, इधर रानीप में है मेरे घर के पास, फट से याद आ गया मुझे। आपके घर के सबसे नजदीक बैंक कहाँ पे है, ये भी याद आ गया। आपके घर के सबसे नजदीक का आइसक्रीम शॉप कौन सा है, पहला आइसक्रीम शॉप। यस, यू अंडरस्टैंड। इस सभी के लिए, इफ आई से मेडिकल स्टोर कहाँ पे है, एटीएम कहाँ पे है, इफ आई आस्क एनी ऑफ दिस क्वेश्चन, आप इन प्रश्नों के लिए कभी भी गूगल को सर्च नहीं करोगे, बट प्राइवेट गूगल को सर्च करोगे। तो सीधा अर्थ यह है कि गूगल आपको 0.003 सेकंड में आंसर देता है, बट उससे भी अधिक फास्ट हमारा पर्सनल प्राइवेट गूगल जो है वो हमें उत्तर देना है। तो मार्केटिंग ऐसे करना है कि लोगों के पर्सनल गूगल के अंदर हमारी प्रोडक्ट, हमारी ब्रांड घुस जाए, उतना मार्केटिंग करना है। प्राइवेट गूगल इज 100 टाइम्स फास्टर देन द एंड्रॉयड गूगल। आप लोगों की मेमोरी में है, फट से लोगों को याद आना चाहिए। हमारे ब्रांड का नाम कहां पर रजिस्टर होना चाहिए, लोगों के प्राइवेट गूगल के अंदर। सर्च इंजन कीवर्ड जो हैं, ये गूगल ने, बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, उन्होंने कीवर्ड फाइंड किया अपने ब्रांड के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और उन्होंने काम यह किया कि लोगों के प्राइवेट गूगल के अंदर अपने उस शब्द को फिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल ने कौन सा कीवर्ड पॉपुलर किया था जो लोगों के प्राइवेट गूगल के अंदर घुस चुका है, दैट इज आई। आईपैड, आईपोड, आईफोन, आई मैसेज, आई वॉच, आई टीवी। गूगल सर्च द लॉट अबाउट द मोस्ट सर्च वर्ड ऑन इंटरनेट। ध्यान से सुनना, गूगल ने यह सर्च किया कि इंटरनेट पे कौन सा शब्द सबसे अधिक बार सर्च किया जाता है, और उनको यह सर्च में यह पता चला कि सबसे अधिक बार सर्च किए जाने वाला शब्द है सर्च। तो उन्होंने अपने आप को गूगल सर्च इंजन बोलना चालू कर दिया। अब जब भी आपको कोई भी सर्च इंजन शब्द याद आता है, तुरंत आपको गूगल याद आएगा। तो मैं क्लियर, जब भी मैं सर्च इंजन कहूंगा आपके मन में गूगल याद आ जाएगा। इसलिए आज इतने सारे अल्टा विस्टा से लेकर के मोजिला से लेकर के इतने सारे हैं हमारे पास, सबसे अधिक कस्टमर जो है वो गूगल के पास है। सो द स्मॉल बिजनेस ओनर्स अपने लिए कर सकते हैं रादर देन अपनी प्रोडक्ट के लिए। अभी मैं बात कर रहा हूं कालू वेफर्स की, जो सबसे छोटे तालाब के अंदर घूमते हैं। हो सकता है वो अपनी प्रोडक्ट को उतना प्रमोट न कर पाए, बट कई बार उनके नाम से प्रोडक्ट बिकती है। सो एनमैन किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर ये तखल्लुस जो था, एंग्री यंगमैन किसको कहेंगे, अमिताभ बच्चन को कहेंगे। आयरन लेडी किसको कहेंगे, इंदिरा जी को कहेंगे। राइट, गॉड ऑफ क्रिकेट किसको कहेंगे, सचिन जी को कहेंगे। जंपिंग जैक, जितेंद्र जी। ट्रेजेडी किंग, आदरणीय दिलीप कुमार जी। सिल्वर जुबली स्टार, राजेंद्र कुमार। ये इन सबके साथ एक तखल्लुस, एक टैगलाइन जुड़ चुका है। ये तखल्लुस और टैगलाइन जो है वो कस्टमर्स के दिल के अंदर चला जाता है, मन के अंदर चला जाता है। और जब भी जंपिंग जैक शब्द आता है, पीपल ऑफ माई एज वुड ऑलवेज रिमेंबर जितेंद्र जी। राइट। सो क्यों ये चाहिए, ये तखल्लुस, ये कीवर्ड, ये उपनाम क्यों चाहिए? बिकॉज तखल्लुस इसलिए नहीं चाहिए कि उनको फेमस होना था, इट्स अदर वे राउंड। वो फेमस इसलिए हुए कि उनके पास एक तखल्लुस था। बिकॉज दे अडोप्टेड द तखल्लुस, दे बिकेम वेरी फेमस। तो समटाइम्स आपको भी ये करना होगा कि कई बार तखल्लुस को आपको एडोप्ट करना पड़ेगा। कई बार ये गलत हो सकता है। यस, टाटा डी द ग्रेट मिस्टेक। उन्होंने तखल्लुस दिया था, उपनाम दिया था, कीवर्ड दिया था द चीपेस्ट कार, एंड फेल्ड मिजरेबली। Till now, I think I have used 7 different cars. One of them was Nano. And without any hesitation, let me tell you, this was the best car I ever had. Super duper car. But because they labeled it, Takhallus jo diya tha, that was the cheapest car, they miserably failed. In fact, they should have said the smallest car. तो आप भी यदि एमएसएमई में हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट को या उसको कुछ तखल्लुस दे रहे हैं जो लोगों के
प्राइवेट गूगल में जाना चाहिए, मेक श्योर वो प्राइवेट गूगल में से बूमरैंग ना हो, द चीपेस्ट कार जैसा बूमरैंग ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सम अदर थिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, क्या याद आएगा आपको? इफ आई से ऑनलाइन शॉपिंग करना है, नेचुरली यही अमेजोन ही याद आएगा आपको। इफ आई से होम डिलीवरी इन पिज्जा सेगमेंट, तुरंत आपको डोमिनोज याद आएगा। इफ आई से 2 मिनट्स, बस मैं इतना ही कहता हूं 2 मिनट्स, तो आपको क्या याद आएगा? मैगी याद आएगी। इफ आई से सिर्फ 6 सेकंड में काम करता है, यू अंडरस्टैंड, मैं इनो की बात कर रहा हूं। इफ आई से 6 हफ्तों में, यू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट फेयर एंड लवली, राइट? कई बार बिजनेसमैन ऐसा भी करते हैं कि अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर एक बिजनेस टैगलाइन लिखवाते हैं। जैसे LIC कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, कैडबरीज कहती है कुछ मीठा हो जाए, या फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस कहता है कि पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। ये कंपनियों का टैगलाइन हुआ। पर समझो आपकी कंपनी उतनी बड़ी नहीं है कि इतनी बड़ी टैगलाइन आप दे पाते हैं। तो यदि छोटी भी कंपनी है तो अच्छे अच्छे टैगलाइन आप कार्ड के ऊपर छपवाइए और उस टैगलाइन का मार्केटिंग करते रहिए, बिकॉज टैगलाइन कैन मेक यू वेरी पॉपुलर। आई गिव यू कपल ऑफ टैगलाइंस। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ बिल्डर, और वो ये उसकी टैगलाइन है, यू गिव अस लैंड, वी विल गिव यू लैंडमार्क। यू गिव अस लैंड, वी विल गिव यू लैंडमार्क। सो अमेजिंग थिंग। एक मेरा दोस्त है, ही इज टेलर, दर्जी है। हिज टैगलाइन इज, योर आउटलुक is our lookout. Good tagline. One of my friends is she's into makeup, etc. Her tagline is, every morning don't wake up makeup. एक कंपनी की टैगलाइन है, नेटवर्किंग इज बेटर देन नॉट वर्किंग। और वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही इज इनटू सुएज क्लीनिंग, गटर साफ करता है इंडस्ट्री की, गंदी गटर है। उसका टैगलाइन है, वी आर नंबर 1 in number 2 business. So this taglines also can be a good marketing tool, यदि आपकी कंपनी के लिए है या आपके लिए है तो। बट प्लीज डू नॉट गो फॉर द चीपर टैगलाइन, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फाइनेंशियल इश्यूज ना, दिस लुक्स वेरी नॉनसेंस। ये इसमें नहीं कोई आता ये सुन के पढ़ के आपके पास, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता ये आप बड़ा जनरल लगता है, राइट? सो ये सारी ऊपर की जो 5 ब्रांड आप देख रहे हैं, अमेजोन, डोमिनोज, मैगी, इनो, फेयर एंड लवली, इन सबके पास अपने अपने कीवर्ड थे। कीवर्ड डालने से, समझो अब मैंने लिखा ऑनलाइन शॉपिंग गूगल में जाकर के, तो फट से पहले अमेजोन आएगा। कीवर्ड से क्या होता है, कस्टमर के उसमें सबसे पहले आपका नाम आता है। माय क्वेश्चन इज, इफ यू आर द MSME ओनर, आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपके स्वयं के लिए, आपकी सर्विस के लिए आपके पास क्या कीवर्ड है? नहीं है, फाइंड आउट। चैट जीपीटी की मदद लीजिए, कुछ नहीं तो मैं अपना नंबर दूंगा, आप मुझसे मदद मांगिए, मैं आपको सहायता करूंगा। बट जब तक वो कीवर्ड आपका नहीं आता, आपका मार्केटिंग अधूरा माना जाएगा, राइट? नाउ एक कीवर्ड आपको खोजना है, उसके बाद में उसको बड़ा ही पॉपुलर करना है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसा शिट कुछ मीठा हो जाए, वगैरह वगैरह। नाउ पीपल की प्राइवेट गूगल में, चलो ये हमने देख लिया। इसको आपको डिस्प्ले करना होगा, लिखना होगा, बोलना होगा, हाईलाइट करना होगा। जहां कहीं भी इसका ढंढोरा पीट सको आप, उसका ढंढोरा आप पीटिएगा हमेशा, राइट? बट क्या ये सारा करने के बाद भी बिजनेस समझो स्टेगनेंट हो गया, देयर में बी स्पेलिंग मिस्टेक, समझो बिजनेस स्टेगनेंट हो गया, ऐसा हो सकता है? आंसर यस, ऐसा हो सकता है। बिजनेस के अंदर भी समझो आपने सब कुछ कर लिया, मार्केटिंग कर लिया, प्रमोशन कर लिया, ब्रांडिंग कर लिया, ग्रोथ कर लिया, ब्लॉग लिख लिया, एडवर्टाइजमेंट कर लिया, कस्टमर्स के पास नेटवर्क, सेल्स, नया स्कीम दे दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी आपका प्रोडक्ट उतना नहीं बिक रहा है, उतना सेल्स नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, जितना होना चाहिए, उस मामले में क्या करें? मतलब सब कुछ करने के बाद, मार्केटिंग करने के बाद भी बिजनेस स्टेगनेंट हो गया है, तो क्या करना चाहिए? सो ये सारे बिजनेस के अंदर होता है। चाहे आप ट्रेनर हैं तो भी ये होगा, चाहे आप फैक्ट्री के ओनर हैं तो भी आपके साथ ये होगा, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप शॉप के ओनर हैं, या फिर आप फार्मा कंपनी के ओनर हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का बिजनेस है, उसके अंदर ये स्टेगनेंटनेस कभी ना कभी तो आती ही। इसको सैचुरेशन कहते हैं। सो हाउ टू बीट द प्लेटो, इसको प्लेटो कहते हैं। प्लेटो को बीट कैसे करें, तो उसके 21 स्टेप हैं। आज समय की मर्यादा देखते हुए हम उसमें से 2 या 3 देख पाएंगे। सबसे पहला होता है, इसको कहते हैं फाइंड द प्रॉब्लम, या ये वाक्य में बाद में पूरा करूंगा।
और चलो कर देते हैं, इसको कहते हैं फाइंड द गैप इन द मार्केट। आई रिपीट, फाइंड द गैप इन द मार्केट एंड क्रिएट द मार्केट इन दैट गैप। मार्केट के अंदर गैप क्या है वो खोजिए और फिर उस गैप के अंदर पूरा का पूरा मार्केट क्रिएट करिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, फूड मार्केट का उदाहरण लेते हैं। फूड मार्केट के अंदर तीन वस्तु आती हैं, एक होती है ग्रेन्स, एक होती है रॉ वेजिटेबल्स, और एक होता है रेडीमेड फूड। सो रॉ ग्रेन्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड रेडीमेड फूड की बात कर रहे हैं। उसमें से हम लेते हैं रेडीमेड फूड। सो रेडीमेड फूड कहां पे मिलता है? रेस्टोरेंट के अंदर। चलो, अब जो रेस्टोरेंट बिजनेस था उसमें गैप क्या था देखिए। मैं समझो यहां से नोएडा गया हूं और अकेला रहता हूं पीजी में या हॉस्टल में रूम लेके अकेला रहता हूं। अब रेस्टोरेंट बिजनेस में गैप कहाँ है? मैं उनसे कहता हूं कि भैया मैं अकेला हूं, मैं रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहता, इज देयर अ सॉल्यूशन? बोले नहीं सर, आपको इधर ही आना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट वाज द फर्स्ट गेम इन द मार्केट। सेकंड में कहता हूं कि भैया मैं आपकी रेस्टोरेंट से 17 किलोमीटर दूर रहता हूं, 17 किलोमीटर अवे, और आपके उसमें लिखा है कि खाली 5 किलोमीटर की त्रिज्या में आप इसको डिलीवर कर पाओगे। Is there any solution? Well, no, sir. We cannot serve beyond 5 kilometers. You just have to come within 5 kilometers range. दूसरा गैप था। थर्ड गैप, you said your minimum order quantity is 500 rupees for the delivery. Now this is too much for me alone. I cannot eat that much of food. So can you give me the lesser food? They said no, we will not give you the lesser food on delivery. If you want lesser food, come to our place. So this is the third gap. Fourth gap, सर आई वांट टू फैच फूड फ्रॉम टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। आपके रेस्टोरेंट से मुझे दाल बाटी चाहिए, नेक्स्ट रेस्टोरेंट से मुझे पनीर चाहिए। वैसे नहीं भाई, हम हमारा ही माल बेचते हैं, बाजू वाले का माल क्यों बेचेंगे? सो इफ आई वांट टू फैच फूड फ्रॉम टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। नेक्स्ट इज आई वांट टू अवॉइड द रश आवर वेटिंग। इट लुक्स लाइक दैट बैगर, भिखारी जैसा लगता है। मैं आपके यहाँ पे आऊं, पैसा भी दूं और भिखारी की तरह लाइन में भी बैठूं। जब मेरा नंबर है तो आप मुझे नाम देके अंदर से बुलाओ, अंदर जाकर मैं खाना खाने बैठूं, बड़ा गंदा लगता है मुझे। आई वांट टू अवॉइड दिस रश आवर। बोले नहीं सर, देयर इज नो सॉल्यूशन, यू हैव टू हैंडल दिस रश आवर। नेक्स्ट गैप, आई वांट टू चिल एट होम विद माय फ्रेंड्स, आई वांट टू वॉच दैट इंडिया पाकिस्तान मैच, और मुझे बाहर गए बगैर बहुत सारे रेस्टोरेंट से खाना चाहिए एंड आई डोंट हैव अ प्यून। सो डू यू हैव अ सॉल्यूशन? रेस्टोरेंट वुड से नो, वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन। इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे गैप्स फूड मार्केट के अंदर थे। किसने ये फूड मार्केट का जो गैप था उसको भर दिया? यू नो द आंसर, जोमेटो एंड स्विगी। उसमें भी स्विगी कहता है कि देयर इज नो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आप एक गुलाब जामुन भी मंगाओ हमारा बंदा देके आएगा आपको। दैट्स ग्रेट। सो ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द गैप इन द मार्केट एंड क्रिएट द मार्केट इन दैट गैप। इफ यू कैन फाइंड दैट, either it can be an amazing marketing strategy or it can be altogether a new startup idea जिसके लिए फंड लोग देने को तैयार हैं। रिसेंटली हमारा एक बंदा आया था, सीए आया था मेरे पास। ही वांटेड 700 करोड़ फॉर वन ऑफ हिज स्टार्टअप आइडियाज एंड वी पिच इन टू 3-4 डिफरेंट प्लेसेस। और हमें एक बहुत बड़ी कंपनी, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम ऑन कैमरा, 900 करोड़ रुपए का फंड मिला है। वी वर सक्सेसफुली fetching the fund of 900 crore rupees, and we are launching Dubai and other places also. So if that idea is really good, you can attract the angel investors and venture capitalists both. ये आराम से हो सकता है। So their first line business solution, Zomato and Swiggy का फर्स्ट एक लाइन का बिजनेस सॉल्यूशन क्या है? इफ यू कांट गो टू रेस्टोरेंट, वी विल ब्रिंग रेस्टोरेंट टू यू। एकदम सीधा साधा। यदि आप रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम रेस्टोरेंट को आपके यहां पे लेके आते हैं। यदि आप इतना सीधा सादी वस्तु का मार्केटिंग कर रहे हो ना, ये टैगलाइन को ध्यान से देखिएगा, इसका यदि आप मार्केटिंग करोगे ना, पीपल विल नॉट आस्क यू कि आप कौन से ब्रांड हो, आप कहां से खाना मंगवाते हो, आप क्या देते हो, आप किस क्वालिटी का देते हो। पीपल वुड फॉल इन लव विद दिस स्टेटमेंट, इफ यू कांट गो टू रेस्टोरेंट, विल ब्रिंग रेस्टोरेंट टू यू। दिस इज कॉल्ड वन लाइन बिजनेस सॉल्यूशन मार्केटिंग।
आपके बिजनेस के लिए भी, आप एमएसएमई है तो आपकी प्रोडक्ट के लिए भी, आपकी सर्विस के लिए भी ऐसी वन लाइन बिजनेस मार्केटिंग सॉल्यूशन आपको खोजना हो। नेक्स्ट, अभी भी अभी भी जोमेटो स्विगी के अंदर एक गैप है। वो गैप ये है कि खाना इनके तक पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाता है। खैर, ब्लिंकिट ने इसका सॉल्यूशन दे दिया है अभी, राइट। सो आप ट्रेनिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, फैक्ट्री, शोरूम कहीं भी हैं, इसको मैं थोड़ा दूर कर रहा हूं, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने मार्केट के अंदर गैप खोज के उसके अंदर मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसकी एक वन लाइन टैगलाइन बिजनेस सॉल्यूशन बनाइए एंड देन मार्केट दैट। नाउ सेकंड थिंग, द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी is called double A triple R. This is the best strategy, most proven strategy in the world. डबल ए ट्रिपल आर ये कहता है कि मार्केट कितना भी सैचुरेट हो चुका है, क्योंकि मैं कई लोगों को कंप्लेन करते हुए देखता हूं कि ये कहते हैं कि सर चाइना से माल आने के कारण हमारा धंधा जो है बंद हो चुका है, बहुत कंपटीशन बढ़ गई है, हम लोग ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। बट आफ्टर दिस डबल ए ट्रिपल आर यू विल अंडरस्टैंड कि ये धंधा भी आराम से चल सकता है। So what is double A triple R strategy exactly? This is the most proven successful strategy of the world till now. उसमें A stands for acquire. आपको बाय हुक और क्रुक कहीं से भी कस्टमर एक्वायर करने हैं। उसके लिए जो करना पड़ता है करो, चाहे किसी का तैयार डेटा उठाओ, चाहे किसी और के कस्टमर्स को आप खींच के लाओ, चाहे उनको लालच दो, जो भी करना है करो। खुद के नए कस्टमर बनाइए अथवा दूसरों के बने बनाए तैयार कस्टमर्स को खींच लाइए। डू यू थिंक दैट सेकंड टैगलाइन, दूसरे के बने बनाए कस्टमर्स को खींच लाइए, इज एन एथिकल जॉब? वेल, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, हम जब मॉल में जाते हैं, जब एयरलाइंस में जाते हैं, जब कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, जब कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, तब एक फॉर्म भर के देते हैं जिसके अंदर हमारा नाम, ईमेल, ये सब कुछ होता है, और सबसे अंत में लिखा है कि यस आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशंस में यही होता है कि आपका डेटा हम किसी और के साथ शेयर करने वाले हैं। इफ यू से नो, यू विल नॉट बी गिवन दैट सर्विस। इसलिए कहीं ना कहीं से तो आपको देना ही पड़ता है। सो आई एम जस्ट लिविंग ऑन योर एथिक्स कि आपको दूसरे के बने बनाए कस्टमर खींचने हैं कि नहीं। बट एक्वायर का अर्थ ये है, खुद के नए कस्टमर बनाइए अथवा दूसरों के बने बनाए कस्टमर्स को कहीं से भी खींच के ले आइए। उसके लिए लोगों को सैंपल दीजिए, लोगों को गिफ्ट दीजिए, लोगों को फ्री बाय दीजिए, लोगों को टेस्ट कराइए, लोगों को ट्रैप करिए, लोगों को हुक और क्रुक कुछ भी करिए, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको कस्टमर्स लाने होंगे। दैट इज कॉल्ड एक्वायर द कस्टमर। आई होप द एक्वायर। किंतु आप जो भी उनको देते हो एक्वायर करने के लिए, उसका एक वैल्यू होना चाहिए। ये लो क्वालिटी कभी भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा लोग आपके पास कभी नहीं आएंगे। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज आप कभी नहीं करोगे। समझो मैं आपको किसी एग्जीबिशन के अंदर चखाता हूं कि सर ये हमारा नया शरबत है, इसको जरा चखिए। दैट शुड बी द मोस्ट प्रीमियम शरबत। उसमें जरा भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किया तो नहीं होगा। जब भी आप कुछ फ्री देते हैं, गिफ्ट देते हैं, सैंपल देते हैं, टेस्ट करवाते हैं या ट्रैप करवाते हैं या उनको हुक और क्रुक खींच लाते हैं, मेक श्योर देयर इज नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। आप उनको वो देते ही हैं। सेकंड ए इज कॉल्ड एक्वेंट। जितने लोगों को आप खींच के लाए हैं उन सबको एक स्टेडियम के अंदर बंद कर दो, तो स्टेडियम के बाहर तो बहुत सारी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है जो स्टेडियम के बाहर है। बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया से तो बहुत बड़ी है। अंदर की दुनिया वाले जितने लोग बाहर की दुनिया में बैठे लोगों को जानते हैं, वो अंदर वाले से हमें कहना होगा कि बाहर की दुनिया में आपके जो भी पहचान वाले हैं उन सबको भी अंदर बुलाओ। दैट इज कॉल्ड एक्वेंट। आस्क देम टू रिफर, आस्क देम टू ऐड, आस्क देम टू इनवाइट। एक कंडीशन रखिए कि यदि आपने 5 लोगों को नहीं बुलाया तो हम आपका ये सर्विस बंद कर देंगे। कंपल्सन डालिए कि ये फीचर खोलना है तो इतने आप तो आपको करना ही पड़ेगा। धमकी दीजिए उनको, उनको पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स दीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि आप 2 लोगों का नाम रेफर करिए तो ओला में अगले राइड में 25 रुपये आपको ऑफ मिलेगा, या फिर आपने क्रेड में या कहीं भी देखा होगा ऐसे रिवॉर्ड्स या पॉइंट्स या धमकी, ऐसी बहुत सारी वस्तु देगी। इसको एक्वेंट कहते हैं। अब उसी लालच में हम क्या करते हैं, वो 25 रुपये बचाने के चक्कर में किसी और 3 लोगों के नाम हम वहां पे डाल के आते हैं।
फिर वो 3 को भी वही बहुत मिलती है कि भाई और 3 का नाम लेके आओ तो आपको इतना रुपया फी मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड आस्क टू रेफर, आस्क टू ऐड, आस्क टू इनवाइट, आस्क टू कंडीशन रखिए, कंपल्सन रखिए, थ्रेड दीजिए, पॉइंट्स दीजिए, रिवॉर्ड्स दीजिए, कुछ ना कुछ करके वो स्टेडियम के अंदर के जो लोग हैं उन्हें कहना है कि बाहर की दुनिया में से लोग हमारे पास लेकर के आइए। दैट्स कॉल्ड एक्वाइंट। आई रिपीट, एक्वायर का अर्थ है कहीं से भी अपने नए कस्टमर बनाए अथवा तो किसी के तैयार बने बनाए कस्टमर को खींच लाए। उन लोगों से यह कहना है कि अब ऐसे लोग जो बाहर की दुनिया में हैं किंतु हमें नहीं जानते हैं, उनको आप अपनी फोन बुक से रेफरेंस कहीं से भी खींच के ले आए, जिसके रूप में उनको रिवॉर्ड पॉइंट धमकी कुछ ना कुछ मिलेगा। सो ये डबल ए हो गया। पहला ए है एक्वेंट, पहला ए है एक्वायर, दूसरा है एक्वेंट। अब ट्रिपल आर में पहले आर पे जाते हैं। फर्स्ट आर इज कॉल्ड रिन्यू। बस समस्या यह है कि हम इनसे कहते हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी फ्री में है, रिन्यू किस बात का फिर। रिन्यू करने से क्या होगा कि यदि आप उनसे कहते हैं कि आपका सर्विस फ्री में ही है, हम फ्री में ही कंटिन्यू करेंगे, मगर रिन्यूअल का फॉर्म भर दीजिए, उससे यह पता चलेगा कि उनको हमारी प्रोडक्ट से संतुष्टि है या नहीं, विद रियली सेटिस्फाइड और नॉट। क्या उनको अभी भी हमारी प्रोडक्ट में रस है या नहीं, या हमारी प्रोडक्ट में कोई खामियां त्रुटियां हैं कि नहीं। सो उससे पता चलेगा कि दो इट इज फ्री, एक लेफ्ट अलोन की फीलिंग आप करवाते हो, दूसरा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक कंपटीशन क्रिएट करवाते हो, उनका इंटरेस्ट वगैरह जानने के लिए भी हमको रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू से ही पता चलेगा कि सच में उनका रस बना है। जैसे कई लोग जो ऑनलाइन सेमिनार करते हैं ना, वो बार बार ये कहते हैं कि यस यू एग्री, चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। इफ यू से 2025 में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, प्लीज राइट 25G इन द चैट बॉक्स। तो 25G यदि कम आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भाई ऑडियंस दिख तो रहा है यहाँ पे बट इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर, एंड देन ही वुड ट्राई टू हुक देम अगेन। सो रिन्यूअल का अर्थ है कि जो वहां पे उपस्थित है किंतु इंटरेस्टेड नहीं है, उनको वापस कैसे हुक किया जाए, इसके लिए रिन्यू करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में जो आएगा आर, दैट इज रिटेन। अब इन्हीं लोगों को रिटेन अपने यहाँ पे संभाल के रखना होगा। उसके लिए कंपटीशन बनाए रखनी पड़ती, अपने प्रेजेंस होर्डिंग के ऊपर, टीवी कॉमर्शियल्स, कंपैरिजन, बेटर ऑफर, सर्वे, फीडबैक, दिस एंड दैट। ये नया 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 हम करते ही जाएंगे, उससे कस्टमर रिटेन रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारी प्रोडक्ट, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी मार्केटिंग देख करके और कंपनी भी तो यही लॉन्च करेगी, तो इनको दूसरी कंपनी में से जाने से अटकाना होगा, हमारे यहाँ पे रिटेन करना होगा। एंड लास्ट आर विल बी revenue, the most important part. Revenue is when it becomes integral part of their life and they are not at the point of no return, you start earning. ध्यान रहे, they must be at the point of no return, तभी जाकर के हमारा अर्निंग चालू होगा। कैन एनीबडी टेल मी कि इस डबल ए ट्रिपल आर से किसने बहुत बड़ा धंधा किया है या किया था? द आंसर इज जियो। जियो ने उस समय मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था जब मार्केट बिल्कुल सैचुरेटेड हो चुका था। वोडाफोन जैसी वोडाफोन स्ट्रगल कर रही थी, आइडिया जैसी आइडिया स्ट्रगल कर रही थी, टाटा डोकोमो बंद हो चुका था, एयरसेल बंद हो रहा था, वर्जिन बंद हो रहा था, एयरकॉम बंद हो चुका था, वीडियोकॉन बंद हो चुका था। ये बंद इसलिए हो चुके थे कि उनको लगता है कि इंडियन मार्केट वॉज कंप्लीटली सैचुरेटेड, हर एक के पास एक फोन आ गया है, अब तो और फोन कहां से लोगों को बेचेंगे और सिम कार्ड कहां से बेचेंगे लोगों को। सो दे स्टार्टेड एग्जिटिंग द मार्केट। उस समय जियो ने मार्केट में एंट्री मारी और उन्होंने डबल ए ट्रिपल आर स्ट्रेटेजी को अपनाई। सबसे पहले क्या किया? एक्वायर किया उन्होंने। तो वोडाफोन के उसके जितने भी कस्टमर थे उन सबको बोला कि हम आपको जियो दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। लाइन लग गई लेने के लिए, किंतु रूल क्या था कि जो भी आप फ्री में देते हो उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, ऑन द कॉन्ट्री दे गिव आइसिंग ऑन द केक। हम लोग यहाँ पे जो और कंपनी के कस्टमर्स थे उनका सबसे बड़ा पेन था कि भैया डेटा प्लान बड़े महंगे बेचते हो आप। दे से कुछ 60-70 रुपए में 3 महीने का डेटा प्लान पर डे 1 GB का फ्री, जाओ ऐश करो। एंड द यूथ, दे स्टूड इन टू लाइन फॉर 2 days 3 days एंड दे टुक द सिम कार्ड। अब ये नया डेटा प्लान फास्ट चलने वाला, 3G में से 4G पे आ गए, फास्ट चलने वाला, उसके लिए क्या चाहिए?
बोले उसके लिए नया फोन चाहिए, पुराने फोन में नहीं चलेगा, पुराना फोन सपोर्ट नहीं करता है। सो दे रिवाइव द एंड्रॉइड इंडस्ट्री ऑल्सो। अब ये हो गया कि सबके पास दो फोन आ गए। आई एम डैम श्योर हम में से भी जितने लोग ये सेमिनार को देख रहे हैं, सबके पास मोर देन 80% पीपल, सबके पास मिनिमम दो फोन होंगे, दो नंबर होंगे। उसमें से एक बात करने के लिए होगा, दूसरा डेटा प्लान के लिए होगा। सेम एडॉप्ट किया ओयो ने। ओयो ने भी ये किया। ओयो ने कौन से पेन को सॉल्व किया, अथवा तो कौन सा गैप था मार्केट में जो ओयो ने सॉल्व किया? मुझे यहां से समझो जाना है कानपुर। अब मैं छोटा व्यापारी हूं, या अभी अभी मेरा एमएसएमई का स्टार्टअप है, या अभी अभी मैं सीए बना हूं, अभी अभी मैं अपना प्रैक्टिस चालू किया हूं। अब उतने पैसे हैं नहीं मेरी जेब में। आई एम गोइंग कानपुर। अब मुझे बड़ा महंगा होटल परवड़ता नहीं है, रोज का 7,000 8,000 रुपये वाला होटल परवड़ता नहीं है। और स्टेशन के आसपास के सपना गेस्ट हाउस में मुझे रहना नहीं है, बिकॉज मैं कहीं पे जाता हूँ, इफ दे आस्क कि भाई कहाँ रुके हो, इफ आई से सपना गेस्ट हाउस, चली इज्जत जाती है मेरी। तो कैन आई हैव अ रीजनेबली प्रीमियम होटल जो उतना कॉस्टली ना हो? ओ सेड यस। उन्होंने क्या किया, ऐसी ऐसी छोटी होटल है जिनके पास ब्रांड नेम नहीं था, रिपीट, ब्रांड नेम नहीं था, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। जिनके पास ब्रांड नेम नहीं था, उन सारी होटल को उन्होंने इकट्ठा किया, एंड दे सेड वी विल गिव यू अ ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, आर यू रेडी टू एसोसिएट? दे सेड यस। सेकंड ऑफर दिया कि आपके जितने भी रूम है, समझो आपके होटल में 30 रूम, 50% रूम हम 50% ईयर के लिए बुक कर लेते हैं, लेकिन उसका भाड़ा 50% ही देंगे। यानी 30 में से 15 रूम हमने 6 महीने के लिए बुक किया, और जिसका आप 7,000 लेते थे या फिर 3,000 लेते थे, उसका हम आपको खाली 1,000 रुपये ही देंगे। जैसे डो के बैठे बिठाए भी हमको धंधा मिल रहा है, किंतु उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। बोले क्या? बोले हर एक रूम को फिर से कलर करवाओ, लॉबी जरा अच्छी कराओ, और चद्दर बदर अच्छी करके बीच में एक लाल तकिया रख दो, ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। सो दैट्स इट, ओके। फिर हम आपका नाम निकाल के वहां पे ओयो का नंबर लगाएंगे। सो ओयो 7526 ऐसे करके कोई होटल होती है तो समझ जाना वो XYZ होटल है। अच्छा, जब लोग साथ में जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन, साथ में स्लीपर्स लेके जाना बड़ा, मतलब एक तरफ मुझे घर से वो पराठा थेपला भी बांध के दिया है, उसी के साथ मेरी चप्पल भी रखनी है बैग के अंदर, मुझे थोड़ा घिन आती है। तो दे से टू दोज होटल्स के एक काम करिए, आप जो है इनको स्लीपर्स होटल के अंदर रूम में घूमने के लिए दे दीजिए। सो वो पेन चला गया। देन दे सेट कि यार फ्री वाईफाई दे दीजिए इनको, वो पेन चला गया। दे सेट कि सवेरे का नाश्ता फ्री कर दीजिए, वो भी पेन चला गया। साथ ही साथ होटल में आके बुकिंग नहीं करना है, वो अपने घर बैठे बुकिंग कर ले, ऐसा इंटरफेस उनको दे दो, वो भी दे दिया। अब 999 में मैं कहीं पे रूम बुक करता हूं, मुझे खाना मिल जाता है, मुझे वाईफाई मिलता है, मुझे स्लीपर मिलती है, और मेरी इज्जत भी बच जाती है। आई विल बिकम द डाई हार्ट फैन ऑफ ओयो इफ आई एम इन टू दैट सेक्शन। मैं जो कह रहा था ना, हैवी वेट, लाइट वेट, मीडियम वेट, ओयो ने कैटेगरी पकड़ा, ऐसी होटल के साथ टाई अप किया जिनके पास लॉबी नहीं है, क्योंकि लॉबी का खर्चा कहाँ आएगा? कस्टमर के ऊपर आएगा। जिनके पास बड़े बड़े झूमर नहीं है, झूमर का खर्चा कौन उठाता है? कस्टमर उठाता है। जिनके पास इनफ पार्किंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल्समैन है, बाय फ्लाइट तो आने वाली नहीं है, बाय ट्रेन आएंगे, बाय एसटी आएंगे, और होटल में रह के रिक्शा पकड़ के निकल जाएंगे, तो वहां पे पार्किंग की आवश्यकता नहीं है। ओयो ने स्ट्रेटेजिकली, देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ऐसे होटल्स को टैप किया और दोनों तरफ का पेन सॉल्व किया, एंड देन ये अमेजोन प्राइम वीडियो ने भी यही किया। जब कोरोना चल रहा था, प्राइम वीडियो उन्होंने फ्री दे दिया, राइट। और आप कहते हैं लाभ इसका 299 399 लाइए। सेम दैनिक भास्कर ने यही किया था, सबके घर में जब ऑलरेडी एक अखबार आ रहा था, उन्होंने दूसरा अखबार डिलीवर किया, एंड दे सेड दिस। सो साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इज, फर्स्ट ड्रग इज नेवर सोल्ड। ध्यान से सुनना, फर्स्ट ड्रग इज नेवर सोल्ड, बट लेटर ऑन द एडिक्ट सेल्स everything for the drug. All right. So with this, I say thank you very much. This is my contact number, 9825168222. We can be in touch with uh, Instagram, LinkedIn, etc. And I open the session for the question answer. Thank you, sir. Thank you, sir, for such a fantastic seminar. I have a Yes, few queries from yeah, ma'am. you. Yeah, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Please go ahead. What are the most innovative marketing strategy currently being used by top companies? Most innovative, as of now, said they are looking for the customers' expressions.
For example, if you go to the Apple store, there are hidden cameras. And when you take the Apple phone in your hand, what expressions comes to your mind on your face? So this is the most innovative technology. They look at your face and they decide whether the product is good or not. There is a mall in Singapore. Uh, there is a hidden gesture is called the positive punishment. There is a camera. You have to look at the camera and you have to smile for 7 seconds, and that to be genuine smile. If you do not smile genuinely, the camera screen will tell you to smile genuinely, you are doing artificial smile. So you have to smile for 7 seconds. When you artificially smile for 7 seconds, you actually really feel happy from inside. And when you go into that mall having a happy feeling, you will purchase more than you require. So this is the strategy they are adopting as of now. Okay. Yeah. Next question is, how can small business implement game-changing techniques with limited budget? If they know what are the top three challenges of their business. Now, these top three challenges can be of the industry, that means everybody is facing that, or that particular company is facing that. If they are very clear with this top three challenges, and if they are very clear with the 5 questions, who is your client, what is my USP, etc., in that case, very low budget can be suffice to uh, bring the marketing change. Yeah. Hmm. How can content marketing be tailored to quickly capture and retain attention? Minimum, there are 18 GPTs are available. Apart from Chat GPT, there are another 17 GPTs. If you ask any GPT to create the content marketing, and if you humanize that, that can really bring the change in the market. If you ask me, are we really using the content marketing in a proper way? My answer is no. Only one out of maybe 10,000 person is using the content marketing properly. So GPTs can be the right solution for that. Okay. How do you ensure that marketing efforts are aligned with long-term brand objective? Vision and mission can be very crucial. The I would say the lighthouse. If the vision and mission is clear with the PMS, that is personal mission statement, everything can be aligned to that. So first, any business owner or organization should make the PMS, vision and mission, and then everything can be aligned with that. Okay. What additional technical qualification or course can be helpful for CA? CA के लिए तो I think investment consultancy, because nowadays people are behind how to fetch the money from the market and how to become the techno savvy. जितने techno savvy अधिक रहेंगे, उतना I think CA के लिए अच्छा रहेगा, because somebody has rightly said, if you feel there is a competition, take the competencies. So I think competency wise, they should be technically very sound. Okay. जी. How content marketing is changing the game? Ma'am, one word which we have been preserved for the last more than 10,000 years. Internet has changed that word into just last 10 years, and that word is yoga. Now, nobody speaks the word yoga. Everybody speaks yoga. This is the power of internet. People have changed the surname of Ratan Tata. His original surname is Ratan Tata. People speak Ratan Tata. This is just because of internet. So internet has an amazing power. If you can tap that power in a particular way, you can be the next millionaire in a very 2-3 years time for sure. How has social media changed the marketing game? Now actually there is no market, there is only a social media market. Because what happens if you go to a store and he says this thing is worth 4,000 rupees, people would immediately check their online कि online कितने में मिलता है. And that's why we have a store like के online से भी सस्ते में हमारे यहाँ मिलेगा. So even to sell the offline things, they are taking the help of the online. So social media is can fetch you the business in the first couple of days itself, rather than spending 1,000 days in the market. Okay. What are the potential of MSME growth in a Surat city of Gujarat? Ma'am, I'm from basically Surat, from Adajan. So I would say there is a real diamond city. And the MSME growth I have seen in Surat as well as in Palanpur. These two cities, I would really say, textile, diamond, and software also. Surat can boom like anything. So I would love to take a batch in Surat, in fact, for the MSMEs separately. I have no more queries, sir. Yeah, ma'am. Any Tell other me, sir. query? No, no query. Okay, No ma'am. query, sir. Thank you, sir. Thank you very much Yes, sir. for wonderful session. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for being a coordinator. Thank you, support team. Thank you very much.
for your support. Thank you, sir. Thank you so much.